वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज़ और आपकी उमंगों का तर्जुमान मैं हूँ, आप अपना इब्ने सिकंदर खान। जी दोस्तों, आज दिन को मैंने अपने पहले लाइव स्ट्रीम में पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स पर बात की थी। मैंने आज के ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया में पाए जाने वाले पॉलिटिशियन, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी अहलियत, उनका उनमें पाया जाने वाला पॉलिटिकल टैलेंट, अपने मुल्क के हवाले से उनकी कारकर्दगी, ये सारे मौज़ूआत डिस्कस किए थे। पाकिस्तान से भी कुछ मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे देखा और इंडिया से भी बहुत से मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे देखा। शफ़क़त मंज़र ऑफिशियल, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे पहले मेरे साथ शरीक सफ़र हुए शफ़क़त मंज़र में आपको वेलकम कहता हूँ। और भी कुछ दोस्त मेरे शरीक सफ़र हो रहे हैं, तो मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। यू आर ऑल वेलकम। IS खान ऑफिशियल आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। मैं कोशिश करता हूँ आपकी आवाज़ बनूँ, आपकी उमंगों करूँ। तो सब दोस्तों से ये मेरी गुजारिश होगी कि जो दोस्त मेरे साथ शरीक सफ़र हों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नए आने वाले दोस्त लाइक करें, शेयर करें। आज के मेरे इस लाइव स्ट्रीम में मेरा ख़ास जो मौजू रहेगा वो इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। मैं कुछ मुवाजना करने की भी कोशिश करूँगा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और इंडियन पॉलिटिशियन, कुछ अक़दार ऐसी हैं, कॉमन हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिशियंस में कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ ऐसी हैं जो इन दोनों मुल्कों में मैंने शफ़क़त मंज़र कह दिया। शफ़क़त भी बहुत अच्छा नाम है। आई एम सॉरी। शफ़ात मंज़र, शफ़ात मंज़र, थैंक यू सो मच। मैं आपका नाम इंतहाई एहतराम से ले रहा हूँ। मैं आपकी बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ही एहतराम करता हूँ। अफसर खान माची, थैंक यू सो मच। आप भी शरीक हुए, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। मैं सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ जो मुझे देख रहे हैं। मैंने सबसे शुरू में अर्ज़ किया कि IS खान ऑफिशियल आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, तो मैं तो सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों कि वो भी आपके साथ यहाँ पर शरीक सफ़र हों। तो मैं मदद करूँगा अगर किसी दोस्त का नाम लेना भूल जाऊँ। आज का हमारा ये लाइव स्ट्रीम बहुत ख़ास लाइव स्ट्रीम होगा। आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों का थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑपरेशन करूँगा इस लाइव स्ट्रीम में। मैंने आज दिन को जो मेरा पहला लाइव स्ट्रीम था उसमें भी मेरा यही टॉपिक था, तो उससे इंडिया में मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, काफ़ी नाराज़ भी हुए और कुछ ने मुझे कहा कि ये इंडिया का जासूस है, पाकिस्तानियों ने कहा ये इंडिया का जासूस है और इंडिया वालों ने कहा कि मैं पाकिस्तानियों का जासूस हूँ। कुछ ने मुझे आतंकवादी कहा, कुछ ने मुझे टेररिस्ट कहा, कुछ ने मुझे कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चलें, ये बात ठीक है कि आपने ये कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वाकई में वो इंडिया में मेरे बहुत से दोस्त थे जो दिन को देख रहे थे, तो उन्हें मैं पढ़ा लिखा नज़र नहीं आया। कुछ ने कहा मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हालांकि मैं तो काफ़ी खूबसूरत हूँ। मैं तो देखता हूँ, मैं जब मिरर देखता हूँ तो मैं तो काफ़ी खूबसूरत हूँ। मेरे मुखड़े पे काले काले तिल हैं, लेकिन मैं सियालकोटी मुंडा नहीं हूँ। बदकिस्मती से मैं पठान हूँ, मैं सियालकोट का मुंडा नहीं हूँ। तो बहरहाल दिन को जो हमारा मौजू था बड़ा ख़ास मौजू था और मैंने बड़ी संजीदा गुफ्तगू की और अपने दोस्तों तक सच पहुँचाने की।
सच को डाइजेस्ट करना ज़रा औखा होता है, मुश्किल होता है। तो सच को हजम करने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। दूसरा मैं ये भी अर्ज करूंगा कि हर आदमी को दूसरा बंदा अपने जैसा नज़र आता है। अगर मैं कोई चोर हूं तो मुझे आप सब चोर नज़र आएंगे। अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे तो आप सब नमाजी नज़र आएंगे। जो दोस्त मुझे लग रहा है, मुझे जो दोस्त पर देख रहे हैं, मैं समझता हूं आप सब नमाजी हैं। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे आप भी झूठे नज़र आएंगे, क्योंकि मैं खुद कसरत से झूठ बोलता हूं। इसी तरह से जो जाहिल होता है उसे दूसरे जाहिल नज़र आते हैं, हालांकि वो खुद। ये अंग्रेज़ी की एक बड़ी मशहूर वो है कहावत है कि द पर्सन हु वांट टू फूल अदर्स हिमसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फूल इन द वर्ल्ड। एक और जहाँ अमेरिका के मशहूर ज़माना सदर थे इब्राहिम लिंकन, उनका कहना था, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। आप कभी कभी लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपने दोस्तों को। अमूमन वो लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता उसे तो आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते। लेकिन वो लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हैं उन्हें आप बाज़ औक़ात बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन थोड़े से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। हमेशा हमेशा के लिए आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इवन के जो असल वो बेवकूफ़ है उसे भी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर वो शख्स जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है वो खुद बेवकूफ़ होता है, दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाता। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की बात की, पॉलिटिकल लीडर्स की बात की, तो बदकिस्मती से आज इंडिया में, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में इंडिया में और पाकिस्तान में जो लीडर्स इस वक्त रूल कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, और वो अपने मुल्क के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मेरा सब्जेक्ट था। इससे इंडिया वाले मेरे कुछ दोस्त नाराज़ हो गए, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। और नरेंद्र मोदी, हालांकि मैं इंडिया वालों को मैंने ऑप्शन भी दी कि मेरे दोस्तों, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, मेरी आपसे, आप मेरे दोस्त हो, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है। मैं तो यहाँ मोहब्बतें बांटने आता हूँ, अमन का पैगाम लेके आता हूँ। और इंडिया के साथ भी इंडिया वाले जो दोस्त मुझे देखते हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुझे, मेरे ख्याल में जितने मुझे पाकिस्तानी देखते हैं उतने ही मुझे इंडिया वाले। तो मैं इंडिया वालों के लिए भी दोस्ती का पैगाम लेके आता हूँ। और एक बात ये भी मैं शुरू में ही अर्ज कर दूँ, इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो तो मेरे भाई हैं, जो हिंदूज़ हैं, जो सिख हैं। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट करते हैं वो इंडिया के सिख हैं। इंडिया के सिख मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, और मैं भी फिर सिखों की, ज़ाहिर है जो मेरे सिख भाई दोस्त हैं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इंडिया के बहुत से सिख हैं पंजाबी वाले, तो ये कमेंट्स में अभी कुछ आ भी जाएंगे, तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं भी उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ मुझे बहुत ही बेहुदा किस्म की गालियाँ निकालते हैं, मैं उस तरह की बेहुदा गालियाँ अब नहीं निकाल सकता। अच्छा, NK GMR, यू आर आल्सो वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। अफसर खान, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। मैं सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। तो जो दोस्त मेरे साथ शरीक सफ़र हो चुके, सबसे मेरी ये गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बार बार मैं ये रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक फायर वॉल लगा दी है। वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल दहशत गर्दी के लिए, हालांकि जिन्होंने ये फायर वॉल लगाई है वो खुद सबसे बड़े डिजिटल टेररिस्ट हैं, वो खुद सबसे बड़े डिजिटल दहशत गर्दी करने वाले हैं। तो मेरी आवाज़ के दरमियान जो ये दीवार लगी है, इसे हटाने के लिए ये ज़रूरी है कि सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने आपको अभी कहा कि इंडिया में और पाकिस्तान में आज के कुछ लीडर्स में, 4-5 लीडर्स हैं, उनकी मैं UNO की स्पीचेस आपको सुनाऊंगा। आप तो जो से सुनिएगा, बड़ी ख़ास नरेंद्र मोदी की स्पीच भी सुनाऊंगा, शहबाज शरीफ की भी सुनाऊंगा, और आज मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्पीच भी सुनाऊंगा। और साथ
इंदिरा गांधी का भी एक छोटा सा क्लिप आपको गांधी खानदान के हवाले से इंडिया वाले दोस्तों को सुनाऊंगा। और इमरान खान की स्पीच तो जाहिर है मैंने सुनानी है, पाकिस्तान के हवाले से बात होगी तो इमरान खान की बात भी होगी। इनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी तो इंतकाल कर गए। लाल बहादुर शास्त्री पर मैंने एक व्लॉग बनाया है 2 दिन पहले। मैं वो व्लॉग, लाल बहादुर शास्त्री को भी मैं बड़े ऊंचे रैंक में गिनता हूँ, बड़ा लीडर था, वो इंडिया का था। तो अब इंडिया वालों को तो खुश होना चाहिए कि मैं इंडिया ही के कुछ प्रधानमंत्री जो अच्छे थे उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जो आदमी गंदा है मैं उसकी कैसे तारीफ करूं। मैं जबकि नरेंद्र मोदी की ना गुफ्तार अच्छी, ना किरदार अच्छा, ना कि इंडिया का भी बेड़ागर कर दिया उसने, तो मैं उसकी कैसे तारीफ करूं। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ दोस्त चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अप्रिशिएट करूं। अब आप बताइए मैं शहबाज शरीफ को कैसे अप्रिशिएट करूं। शहबाज शरीफ की वो कौन सी खूबी है जिससे गिन के मैं कहूं कि इसमें बड़ा टैलेंट है भाई, इससे बात करने का बड़ा अच्छा सलीका आता है, इसकी शक्ल बड़ी अच्छी है, इसका कद बड़ा लंबा है, ये मेरी तरह का फास्ट बॉलर है, बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है। अब उसमें कोई खूबी है ही नहीं, तो मैं अगर ये कहूं कि उसमें ये खूबी, तो ये झूठ होगा, और झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। और इसी तरह से इंडिया में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे देख रहे थे, वो गालियां दे रहे थे कि उन्हें, वो चाहते थे कि मैं झूठ कहूं, पाकिस्तान को नीचा दिखाऊं, इंडिया को ऊंचा। भाई मैं इम्पार्शियल होके, यह बात मैं आपको अर्ज करूं, इम्पार्शियल होके, गैर जानबदार होके बात करूंगा। मेरी नज़र में जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो मैं सच कहने की कोशिश करूंगा। मैं इंडिया वालों को भी ये पहले बता दूं, मैं आपको अपना दोस्त समझता हूं, भले आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान तो हैं ही मेरे भाई। तो मैं आप सबको दोस्ती का पैगाम देता हूं, मैं यहाँ नफरत फैलाने के लिए नहीं आता। मैं जंग से, हैट्रेडनेस से मैं नफरत करता हूं। अब इंडिया की जब बात आएगी तो इस वक्त की मौजूदा लीडर, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और इंडिया का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ शायद एक ही नस्ल के हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। सोच के एतबार से, फिक्री एतबार से दोनों मिलते जुलते हैं, इनमें बहुत सी खूबियां मुश्तरक हैं। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में शहबाज शरीफ काफ़ी बहादुर है, और इंडिया का बेड़ा गर्क करने में इंडिया को बेड़ा गर्क करने में नरेंद्र मोदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कहता यह है कि मैं इंडिया की रक्षा करूंगा, केवल रक्षा ही नहीं करूंगा, इंडिया को मैं अमन और शांति का गहवारा बनाऊंगा, मुल्क शांत हो जाएगा, इंडिया की जनता को रक्षा मिलेगी। थैंक यू असद, थैंक यू सो मच, यू आर आल्सो वेलकम। अच्छा, जो दोस्त मेरे साथ शरीक सफ़र हुए, प्लीज़ आज हमने डबल 100 करना है। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, दिस इज योर चैनल, योर फैमिली डिजिटल प्लेटफॉर्म। सब दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा आज मुझे ज़्यादा व्यूअर्स चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको सबसे पहले, मेरी जो नज़र में, जो मेरी सोच है, जो मेरी फिक्र है, वो मैं भी समवेयर आई एम रॉन्ग। अगर मैं कोई गलत बात करूं, झूठ कहूं, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप झूठ कह रहे हो। लेकिन अगर मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं तो ये ज्यादती वाली बात है कि आगे से मुझे गालियां देना शुरू कर दें। भाई हम तो, आप तो मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे, जो मुझे देख रहे हैं, आपसे मैं मुखातब हूं। भाई मैं आपको दोस्त समझ रहा हूं, मुझे पता है, और आप भी मुझे दोस्त समझ के ही मुझे देख रहे हैं। तो हम एक दूसरे के साथ ये झगड़ा शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं है। अगर आपका कोई खदशा है, या अगर आप किसी बात से आपको महसूस हुआ कि ये बात में, जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूं वो गलत है, आप बताइएगा, मेरी मालूमात में इजाफा होगा, मैं आपको थैंक यू करूंगा। नरेंद्र मोदी कह रहा है जी कि उसने इंडिया में बड़ा इनकलाब लाया, उसने इंडिया में ये किया, वो किया, और इंडिया के कुछ बेवकूफ़ ऐसे हैं, वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सचमुच का इंडिया में कोई इनकलाब लाया है, और इंडिया में ऐसे, और इसी वजह से उन्होंने इंडिया में
उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया और उसे अपना प्रधानमंत्री बना लिया। हालांकि मैंने इंडिया वालों को कहा कि राहुल गांधी को वोट दो, राहुल गांधी जो है वो बेहतर है, नरेंद्र मोदी से बहुत बेहतर है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन इंडिया वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। हालांकि मैं पठान हूं, हम तो, मैंने कहा, उन्होंने ये कहा मैं पठान हूं, हमने तो इंडिया वालों के साथ हमेशा हैं। तो बहरहाल इंडिया वालों ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही इलेक्शन जितवा दिया। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी, इंडिया 145 करोड़ लोगों का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया। इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, और उसका जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया वो नरेंद्र मोदी को बनाया। ये इंडिया वालों के लिए खुद एक गाली है कि अब्यूज से कम नहीं है। और सेम लाइक द इंडिया, नवाज शरीफ इज नॉट लेस देन अब्यूज ऑफ पाकिस्तानी पीपल। नवाज शरीफ एक गाली से कम नहीं है पाकिस्तान के लोगों की। मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहा है, और पाकिस्तानी कौम में इतने बेवकूफ़ हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं, और वो कहते हैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इनकी जय हो। इंडिया में भी इसी तरह मेरे दोस्तों कुछ बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय हो। तो इंडिया और पाकिस्तान का तो बेड़ा हो गया गर्क, और इनका बेड़ा गर्क करने के लिए इन्हें बाहर के किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। ओ भाई, तुम्हारे प्रधानमंत्री खुद तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी हैं, वो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इंडिया का बेड़ा गर्क करने के लिए, इंडिया को तबाह करने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हर बात में कहता है अच्छा वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप अंदाज़ा करो, हालांकि इंडिया को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद ही काफ़ी है, पाकिस्तान की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कहते हैं कि हम इंडिया से ये करेंगे। भाई, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इंडिया वालों, खुदा के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अपनी सेना को कहो वो इंडिया की रक्षा करें। इंडिया का चाइना वाले उल्लंघन कर रहे हैं तो चाइना वालों से अपनी जान बचाओ मेरे इंडिया के दोस्तों। चाइना वाले आपका उल्लंघन करते हैं। चाइना वालों ने इंडिया का बहुत बार उल्लंघन, 62 में उल्लंघन किया। फिर चाइना वालों ने आपसे 5 फिंगर्स भी छीन ली, हिमाचल प्रदेश आपसे छीन लिया। इंडिया का 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो चाइना वालों ने इंडिया से छीन लिया, और इंडिया की सेना इंडिया की रक्षा ही नहीं कर पा रही। तो इंडियन सेना को चाहिए कि वो इंडिया की रक्षा करे। पाकिस्तान की अगर तबाही की आप बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये इंडिया से ही शहबाज शरीफ आया है। वो पाकिस्तान को जितना भी तबाह कर सकता है वो कर सकता है। इंडिया की सेना, इंडियन सेना पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए शहबाज शरीफ थोड़ा है भाई। सेम लाइक शहबाज शरीफ, आई विल से, इंडिया को तबाह करने के लिए पाकिस्तानी सेना की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी ही काफ़ी है। अब कुछ दोस्त इस बात को मजाक ना समझें, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। पहली बात यह होती है मेरे दोस्तों, जो दोस्त मुझे सुन रहे हो, आपके मुल्क का जो लीडर होता है वो आपके पूरे मुल्क के लोगों का फेस होता है, चेहरा होता है। ही रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री, द होल कंट्री। नरेंद्र मोदी जब यूएनओ में जाके स्पीच करता है तो वो इंडिया के रहने वाले, वो केवल बीजेपी की नुमाइंदगी नहीं करता, वो केवल किसी एक इलाके की, गुजरात की नुमाइंदगी नहीं करता। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग गुजरात इन यूएनओ। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली हिंदूज इन यूएनओ। He is not representing a specific group of Indians in UNO. He is representing the entire Indian nation in United Nations. और आपका जो प्रधानमंत्री है मेरे दोस्तों इंडिया का, वो जब यूएनओ में स्पीच करता है तो उसको बात करने का तरीका भी नहीं आता। शक्ल तो चलो जैसी भी है, शक्ल भी उसका कद भी इतना अच्छा नहीं है। तो इंडिया वालों को चाहिए भाई अमिताभ बच्चन को अपना प्रधान, अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में मैंने देखी हैं, मुझे भी अमिताभ बच्चन लगता बहुत अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है वो। तो मैं तो कहता हूँ इंडिया वालों के लिए अमिताभ बच्चन भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर इंडिया के मेरे दोस्त प्रधानमंत्री बनाए
तो नरेंद्र मोदी से तो 1000 गुना 1000 टाइम बेटर देन नरेंद्र मोदी। जो दोस्त मेरे थैंकफुल, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आज मैं 200 हो गए, 200 व्यूअर्स आ गए। मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ। जज़ाकल्लाह। जो दोस्त मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबका थैंकफुल हूँ। तो आप सब दोस्त और भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, अपने दोस्तों को इनवाइट करें। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। व्यूअर तो बहुत आ गए लेकिन लाइक नहीं किया। तो सब दोस्तों से ये गुजारिश है, प्लीज़ जो मुझे देख रहे हैं, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 3 लाइक्स आए हैं 200 व्यूअर्स में, सिर्फ 3 लाइक ये ज्यादती है। ये आपका अपना चैनल है। मैं सच कहूँगा आपके और आपकी नॉलेज में मैं कुछ ऐसे हकायक आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश हो, वेदर यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, everybody who is watching me right now, this I am asking you, this is your digital platform, this is your channel. So please, all friends, subscribe this channel, like it, share it, and I want your comments. Your comments can guide me. I want to learn from you. If you can learn something from me, that is my pleasure. I'm thankful to you. And if I will learn something from you, I will also thankful to you because I'm learning from you and from your comments. तो मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं उनसे मेरे दोस्तों खुद भी लर्न करता हूँ। तो मैं अगर आपको कुछ सिखा सकूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो सब दोस्तों से मैं एक बार फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। थोड़ा सा ये लाइव स्ट्रीम लंबा होगा, इस वजह से लंबा होगा कि मैंने इंडिया के कुछ लीडर्स आपको दिखाने हैं और इंडिया वालों की भी पुरानी यादें भी कुछ ताज़ा हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया के उन लीडर्स को, उस लीडर को जो मुझे बड़ी पसंद है। वो लीडर है इंडिया की इंदिरा गांधी साहिबा। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर थी। देखें, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की मैं बात बाद में करूंगा। इंदिरा गांधी की अगर बात की जाए, आई थिंक इंदिरा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। उसमें बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी थी। इंदिरा गांधी की शक्ल भी अच्छी थी और इंदिरा गांधी को बात करने का सलीका भी आता था। यह नरेंद्र मोदी की तरह नहीं थी। वो आजकल इंदिरा गांधी का पोता है राहुल गांधी। तो इंदिरा गांधी की वजह से मैंने कहा राहुल गांधी जैसा भी है, इंदिरा गांधी का पोता है, तो इंदिरा गांधी वाली कोई खूबियां उसमें तो होंगी। लेकिन मेरी बात इंडिया की जनता ने नहीं सुनी, मेरी बात भारतीय जनता ने नहीं सुनी। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम, सलूट, थैंक यू सो मच को वेलकम भी कहता हूँ। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। आई एम सॉरी इफ मैं अगर किसी दोस्त का नाम ना ले सकूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ज़रा अपनी गुफ्तगू फिर कटती है तो इस वजह से मैं बाज़ औक़ात आपको वेलकम नहीं कर सकता। सोनू यू आर वेलकम, सोलू यू आर आल्सो वेलकम। मैं सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। दोबारा में 200 को टच किया है। सब दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब मैं आता हूँ आपकी इंडिया में नेहरू और गांधी के बाद एक इंडिया में लीडर आया था लाल बहादुर शास्त्री। मैंने उस पर एक व्लॉग भी बनाया। लाल बहादुर शास्त्री वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। मुझे वो बहुत अच्छा, इंडिया में बहुत अच्छे लीडर आए। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंडिया में एक लीडर आई इंदिरा गांधी, जो कि बहुत बड़ी लीडर थी। मैं इंदिरा गांधी को बहुत लाइक करता हूं। वेल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। इंदिरा गांधी के बाद इंडिया में एक लीडर आया अटल बिहारी वाजपेयी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी पसंद करता हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आया ये नरेंद्र मोदी से पहले था इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो क्या बात है, वन ऑफ द बेस्ट लीडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस। इंडिया ने ये जो मौजूदा तरक्की की है, इसकी बुनियादें डालने वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंडिया वालों को किसी की नजर लग गई, चश्मे बदूर। अब वो इंडिया जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोगों ने प्रधानमंत्री बने, वो इंडिया जिसमें इंदिरा गांधी जैसे लोग, वो इंडिया आज नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया। इससे बड़ी बदकिस्मती मेरे ख्याल में कोई नहीं है। मैं अब आपको दिखाने लगा हूं इंडिया का सबसे गलीज
और ये मैं इसके नाम नहीं चाहूँ, इंडिया में सबसे जायल आदमी है जिसको इंडिया वालों तो आपने अपना प्रधानमंत्री बना दिया है। ये आपका प्रधानमंत्री बनने के आयल ये शख्स नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का कह रहा हूं, वो भी इंडिया का प्रधानमंत्री था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन आपने आप इसकी कोई खूबी बताएं, आपने इसको कैसे बना दिया? इसने ये तो इंडिया को तोड़ रहा है। मैंने कहा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जो आपका लीडर है अपना मौजूदा आपका प्रधानमंत्री है, बाद में मैं इंदिरा गांधी को भी दिखाऊंगा, बाद में मैं आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी सुनाऊंगा। और यूएनओ आप देखें, एक इंटरनेशनल फॉर्म है यूएनओ, पूरी दुनिया के लीडर बैठे हुए हैं, सामने आप बात कर रहे हैं, दुनिया के 197 कंट्रीज के लोग वहां पर बैठे हैं। नॉट द बेस्ट, ही इज बेटर। देखें, मैं आगे मेरी बात पहले मुकम्मल हो जाए। थैंक यू सो मच सानू, यू आर वेलकम। अच्छा, अब दोस्त माशाअल्लाह बहुत से दोस्त आए हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। IAS खान ऑफिशियल आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, IAS खान ऑफिशियल आपका चैनल है। सब दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपने कमेंट्स लिखें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब मैं अपने में आपकी राय, अपनी राय भी साथ दूंगा, साथ में सबूत के साथ बात करूँगा। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि इंडिया वाले, राहुल गांधी बहुत अच्छी ऑप्शन थी। बहरहाल इंडिया के लोगों ने जिस शख्स को वोट दिए वो कौन था? वो था नरेंद्र मोदी। अब ये नरेंद्र मोदी की ये स्पीच है, ये मैं थोड़ी सी आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये नरेंद्र मोदी की ये स्पीच सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा प्लीज़। मैं दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा, फिर मैं आपको शहबाज शरीफ की स्पीच सुनाऊँगा, तो फिर मैं अपने कमेंट्स दूंगा। आप मुझे बताइएगा कि आप No, Rahul Gandhi is 45 year old, not a child man, not a child man. I think he is 45 or 46 year old. How is you are saying that he is a child? He is not a child. He is 45 or 46 year old. इंडिया में 45 साल का भी बच्चा ही होता है भाई। ये नरेंद्र मोदी को मैं पहले दिखा दूं, बाद में बात करेंगे मेरे दोस्तों, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। पहले जरा ये नरेंद्र मोदी को देखिए, ये यूएनओ में पूरी दुनिया के लीडरों के सामने बात कर रहा है। ये बात कैसे कर रहा है? मेरे ख्याल में तो मुझे तो शर्म आ रही है। ही इज ओनली 45 years by body, not by brain. And what do you say about Indira Gandhi, and what do you say about Manmohan Singh? Okay, I will answer you. I will answer you first, then I will go and show you clips. Okay, I will answer you. Ask your question, please. First, Sanu, ask your question. You did not ask any question. You are just saying me to answer you us first. I am answering you. I am answering you. I am showing you Narendra Modi speech in United Nations, in UNO. Now you watch this speech by yourself. What do you think about your country? Well, my country politicians are worse than Indians. Indians are a bit better. Narendra Modi, I think Narendra Modi and Shahbaz Sharif are same. Okay, Sanu, what do you? I am telling you, Pakistan and India are very very same. देखो, इंडिया के लीडर इंडिया की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, और पाकिस्तान के लीडर पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इंडिया के लीडर भी जाहिल, अनपढ़, गंदे लीडर हैं, और पाकिस्तान के भी गंदे लीडर हैं। पाकिस्तान का जो सबसे गंदा आदमी है वो शहबाज शरीफ है, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। और इंडिया का सबसे गंदा आदमी जो है वो तुम्हारा मोदी है, वो इंडिया का लीडर है। तुमने उसे अपना लीडर बना दिया। In politics, we are very similar. इंडिया के और पाकिस्तान दोनों के बेवकूफ़ हैं, मैं ये कह रहा हूं। ये देखो जरा इंडिया का लीडर, मैं पहले आपको इंडिया के लीडर को दिखाऊंगा। देखें, पाकिस्तान के लीडर को भी दिखाऊंगा, पाकिस्तान के भी अच्छे लीडरों को भी दिखाऊंगा, गंदे लीडरों को भी दिखाऊंगा।
इंडिया वालों को पहले मैं गंदे लीडरों को दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा देख लीजिए, फिर मैं बात। अच्छा, जो दोस्त मेरे साथ शरीक सफर हो रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो सब दोस्तों से ये गुजारिश है, भले आप किसी भी जगह से हैं, यू आर ऑल माई फ्रेंड। तो सब दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। No, no, why not? I will focus on India as well. Why not Indian? Indian are my neighbor. Indian are my neighbor. We were living in one country before Pakistan, before 1947. India and Pakistan were one country. Why you are saying this? You are, आप बहुत तंग नजर है, बहुत छोटी नजर है आपकी। सनू, आप कहते हैं कि अपने मुल्क पे वाई इंडिया। मैं इंडिया की भी बात करूंगा। इंडिया भी हमारा, इंडिया और पाकिस्तान पहले तो एक मुल्क थे, अब इंडिया 47 के बाद इंडिया लागू हुआ है। तो इंडिया जो है अल्लाह अकबर, इंडिया जो है वो कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहा है कि इंडिया की बात ना करो। ओ यार, मैं अभी, आप मेरे साथ जमे रहो, अभी तो मैंने बात शुरू की है, अभी मैंने बात शुरू की है। तो इंडिया की बात मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम पाकिस्तान की बात करो, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका। सानू, तुम पाकिस्तान की बात करो, मैं तुम्हें नहीं रोकता। तुम पाकिस्तान की बात करो, यू आर वेलकम। तो मैं इंडिया की बात करता हूं, आप, मैं तो इंडिया आऊंगा भी। मैं तो, आई वांट टू कम टू इंडिया, आई वांट टू विजिट इंडिया, आई वांट टू विजिट इंडिया, आई वांट टू ऑफर माय फ्राइडे सलात इन जामिया मस्जिद दिल्ली। मैं तो दिल्ली की मस्जिद में नमाज भी आके पढ़ना चाहता हूं। यस, व्हाई नॉट? Yes, we got separated from India, but before 1947, Pakistan and India were one country. Okay, okay. And before 1947, Aftab, who is IS agent? Well, here someone is saying me IS agent. ISI. ISI agent or ISIS? Oh my God. What is I really appreciate you, sir. Keep going. Okay, thank you. I am Uma, thank you so much. You are welcome. Uma, you are also welcome. Here are some, मैं को कह रहा हूं कि इंडिया में प्रधानमंत्री जो इंडिया का है, वो केवल इंडिया के अवाम का उल्लंघन कर रहा है। वो इंडिया की रक्षा नहीं कर रहा, वो इंडिया की रक्षा नहीं कर रहा, वो इंडिया में शांति नहीं ला रहा। ही इज फूलिंग इंडियन। मैंने कहा कि इंडिया को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी के बाद वो हमेशा कहते हैं युद्ध करेंगे, हम केवल युद्ध करेंगे और पाकिस्तान से साथ युद्ध करेंगे। तुम्हारा प्रधानमंत्री सानू के साथ युद्ध करता है, हम युद्ध तो नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं हम युद्ध नहीं करते हैं, हम युद्ध नहीं करते हैं। आप केवल युद्ध करते हो, कोई और जगह देखो। मैं तो कहता हूं हम मोहब्बत करते हैं। वी लव इंडिया, वी लव बांग्लादेश, वी लव ऑल पीपल। वी डोंट वांट युद्ध विद इंडिया। वी पाकिस्तानी पीपल, आई एम अ पठान एंड वी आर टायर्ड ऑफ युद्ध। हम वार से, युद्ध से तंग आ गए हैं। वी डोंट वांट एनी मोर युद्ध। वी डोंट वांट एनी वॉर विद इंडिया और विद एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। वी डोंट वांट। I am telling you, we don't want war, nor with India, nor with any other country of the world. We want everybody to be friend of our country. I want everybody to be my friend. I don't want any enemy, whether in India or neither in any place in the world. I want friends. I don't want enemies. Okay? Now, I am showing you Narendra Modi. Please listen a bit. A little speech. This is the man to whom you are justifying. You think, well, okay, carry on. If someone, I don't care about that. I don't want to respond. I can block abusers, but I will not block. I will not block because it's very hard
to digest truth. I know it is hard to digest truth for liar. So here some liar, some logicalist people who are watching me, they don't have any logic to talk with me. They don't have knowledge. They are illiterate. They are ignorant. तो ऐसे जाहिलों को why I will not respond them. Okay? No, Sanu, not you, not you. See above, Aftab. 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 What he is doing? You see Aftab. Sanu, thank you so much. I am not asking you that you are abusing. There is someone else who is abusing. See comments of Aftab. Okay, let's go ahead. First of all, I want to, मैं चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी की ये स्पीच सुने. जो दोस्त मेरे साथ शरीक सफ़र हो चुके, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं. ये आपका चैनल है, आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है. तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी इस काबिल नहीं है कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो. बहरहाल आप जरा ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी की ये यूएनओ में उसने स्पीच की है, ये सुनिए. नमस्कार साथियों, हिज एक्सेलेंसी. इसकी शक्ल काम भी देखो, इसकी बात करने का तरीका सुनो, जरा गौर से सुनो. आपको अध्यक्ष पद संभालने की हार्दिक बधाई. आपका अध्यक्ष बनना सभी विकासशील देशों और विशेषकर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए बहुत गौरव की बात है. अध्यक्ष महोदय, गत 1.5 वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है. ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा, ये देखो कैसे झूठ, ये भारत को लोगों को बेवकूफ बना रहा है. टी स्टॉल पर ये केवल नहीं है, ये केवल खुद बेवकूफ नहीं है, ये भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहा है. भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है. सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं. और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड. अध्यक्ष महोदय, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है. एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अर्थात स्व से विकास और विस्तार की सहयात्रा. एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, द नेशन एंड एंटायर ह्यूमैनिटी. और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है. अंत्योदय को आज की परिभाषा में
where no one is left behind कहा जाता है। इसी भावना के साथ भारत आज इंटीग्रेटेड, इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वपोषक हो, यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में भारत में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो अब तक इससे वंचित थे। आज 36 करोड़ से अधिक ऐसे बीमा सुरक्षा कवच मिला है जो पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर भारत ने उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस से जोड़ा। भारत ने ये मैंने आपको थोड़ी सी स्पीच सुनाई। ये मैंने इसलिए सुनाई कि आप इसे गौर से देखो, तवज्जो से सुनो, दिमाग से भी कुछ काम लो। इंडिया में सानू आपको भी मैं कह रहा हूं, आप तवज्जो से इसे सुनो। ये इंडिया का प्रधानमंत्री है। इंडिया ऐसा मुल्क है जिसकी, अंकल फर्स्ट लुक एट योर कंट्री, इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यस, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। आई नो इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. I did not say India is not a beautiful country. India is, oh, yeah, I like India. India is a beautiful country. Okay, thank you. I know India is a beautiful country, but Narendra Modi is not a beautiful politician. What I am saying, listen to me. मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया बहुत खूबसूरत है, इंडिया बहुत अच्छा है। ये तो मैं नहीं कह रहा कि इंडिया अच्छा नहीं है। इंडिया हमारा नाइबर है। इंडिया इज आवर नाइबर। इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया इज ब्यूटीफुल, नो डाउट इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम सेइंग, नरेंद्र मोदी इज नॉट अ ब्यूटीफुल मैन। व्हाई यू इलेक्टेड नरेंद्र मोदी एज योर प्रधानमंत्री? दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स गो अहेड। Not Sanu, we always helped India. I am a Pathan, I am from Afghanistan. We always helped India. हमने इंडिया पर 800-700 साल हमने इंडिया पर हुकूमत की, तो इंडिया हमारा बेटा है। इंडिया इज आवर सन। इंडिया, आप कैसी बात, इंडिया हमारा बेटा है, तो अपने बेटे का ख्याल रखना। पिता, हम इंडिया के पिता हैं। देखें, मैं पठान हूँ, हम इंडिया के पिता हैं। इंडिया जब भी मुश्किल वक्त आता है, हम इंडिया की मदद करते हैं। वी ऑलवेज हेल्प्ड इंडिया इन डिफिकल्ट टाइम। व्हेन यू विल हैव हार्ड टाइम, वी विल कम टू हेल्प यू। Oh, listen to me, listen to me. I am asking you, India is our son. We always helped India. You know, I have told you, I am telling you, हमने इंडिया की मदद की। और आप झूठी फिल्में बना के ये इंडिया की फिल्में देख के बातें ना करें मेरे दोस्तों। आप इंडिया की फिल्में देखते हैं बॉलीवुड में, आप वो को देखते हैं तो आप समझते हैं वो जो कुछ फिल्म। अब पिछले दिनों तुमने अलाउद्दीन खिलजी पर भी, अलाउद्दीन खिलजी ने को तुमने अपनी मदद के लिए बुलाया। अलाउद्दीन खिलजी इंडिया गया, उसने तुम्हारी मदद की इंडिया में। वो तुम्हारी मदद के लिए गया। ही वेंट टू इंडिया टू हेल्प इंडियंस। तो हमने तो इंडिया पर साथ हो। तुम कहते हो पाकिस्तान से कि मैं बात ना करूं। व्हाई आई विल नॉट टॉक अबाउट इंडिया। मैं इंडिया पर बात इसलिए करता हूं, इंडिया हमारा बेटा है। तो इंडिया, पाकिस्तान का देखें, इंडिया हमारा बेटा है और हमने इंडिया पर 750 साल, 750 ईयर्स हमने इंडिया पर हुकूमत की या नहीं की? महमूद गजनवी कौन था बताओ? अलाउद्दीन खिलजी कौन था बताओ? नादिर शाह कौन था बताओ? अहमद शाह अब्दाली, डू यू नो हु वाज अहमद शाह अब्दाली? डू यू नो हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक?
आज भी तुम कैसी बात करते हो, आप कहते हो इंडिया इंडिया बनाया। अच्छा, दिल्ली का जो तुम्हारा वो कुतुब मीनार मीनार वो तुम्हारे बाप ने बनाया है, वो हम नहीं बना के दिया है ना इंडिया वालों को। हम इंडिया के बाप नहीं है तो इंडिया का बाप कौन है? हम इंडिया के बाप हैं। हमने दिल्ली बनाया, ये दिल्ली जो है जहां पर तुम हो हमने बनाया, ये तुमने तो नहीं बनाया। आपको समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान देखें, हम पठान, मैं तो पठान हूं। बेसिकली आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। Basically, my forefather was a Afghan. From my exterior, from my appearance, you can see who is me. मैं आपको यह कह रहा हूं, not only Mughal, just ruled India for 100 years, near about 100 years. Before Mughal, Mahmud Ghaznavi come to India in 1050. Do you know who was Mahmud Ghaznavi? आपको पता नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है महमूद गजनवी कौन था। अच्छा, इंडिया में मैंने कहा, इंडिया में कुछ अच्छे दोस्त भी हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। देखें, हम इंडिया के अच्छा, don't teach me Sugar Kumar, don't teach me English, don't teach the father of both India and Pakistan. I am a Pathan and we are of India and Pakistan. We are fathers. We rule our entire India, Pakistan, Bangladesh, and present in India, what India is right now. We ruled this country for near about 700 years. And so you have to give me respect. Pakistan own Indus Valley civilization. India means Indus Valley civilization. All river Indus is flowing from Pakistan, not from India. One thing. And the oldest city, the oldest Indian civilization that was in Texla or Mohenjo-daro in Sindh. These areas are in Pakistan, not in India. From where the Hinduism take birth, all those places are also in Pakistan. Sacred places of Indian Sikhs, they are also in Pakistan. Nankana Sahib is in Pakistan, not in India. Sahib is in Pakistan, not in India. Texla is in Pakistan, not in India. Harappa Sahiwal is in Pakistan, not in India. River Indus is flowing from Pakistan, not from India. So we are owning Indus Valley civilization and Bangladeshi. We always help you. Not Maharana. I am talking about before Maharaja Pratap. Maharana Pratap was not called Ashoka. Do you know about Ashoka? Who was Ashoka? Do you know who was Ashoka? Well, let's go ahead. अब मैं आपको इंडिया के कैसे लीडर को दिखाता हूं। ये नरेंद्र मोदी ना, I am showing you a leader. This gentleman is also from India, but I like. Watch, please. Please watch. In India, Mr. President, we have sought This is to a leader. promote inclusive This is a development true Indian leader. in Watch multiple him. ways. Legislation has broadened access to education and secured rural livelihoods. We are now building the world's largest program for food security. Digital technology is being harnessed to improve the delivery of public services and benefits to the people. Mr. President, India
is proud of its partnerships with developing countries. Using modest resources, we have built strong ties with Africa. Now and compare the this least man with developed Narendra countries. Modi. We are This man is committed looking to like a building leader. He is 100 talking like a leader. institutions But in Narendra Modi Africa, can't talk like this. have offered capacity This man is building real leader. support, including thousands of scholarships, and made available concessional assistance of over 9.5 billion US dollars. India and Africa are engaging through the India Forum Summit process. We also look forward to participating actively in the third conference on the small island developing states in Samoa in 2014 and contributing to its outcome. Okay, I will tell you. Mr. President, I will tell you climate what is change me, is what is one of me, the and who is defining me. I am telling challenges you. I am telling you. of Please our time. first watch this man. We must summon the This is necessary Dr. Manmohan political Singh. will He was for also an Indian crafting a Pradhan robust Mantri. global response to climate change on the basis of equity and the principle of common but differentiated responsibility. Mr. President, sir, we are deeply concerned about the future of West Asia, a region with which India shares deep bonds of history and one that is critical for our energy security as well as the livelihood of nearly 7 million Indians who work and live in the region. The increasingly lethal conflict in Syria is not only a tragedy for the people of Syria, but also threatens stability and security in the region and beyond. It has been made worse by the use of chemical weapons. The use of chemical weapons, whosoever may have deployed them, must be condemned in the strongest possible terms. India supports strongly the elimination of chemical weapon material and equipment in Syria. There is no military solution to this conflict. We must intensify efforts to end the conflict and seek a political settlement. It is essential that the Geneva II conference be convened at the very earliest. Mr. President, we are encouraged that direct talks have resumed between Israel and Palestine. India supports an early realization of a sovereign, independent, viable and united state of Palestine with East Jerusalem as its capital, living within secure and recognized borders side by side and at peace with Israel. We also remain committed to the Palestinian quest for full membership of the United States. In our own region, Afghanistan prepares for a historic political, security and economic transition. The international community must support the people of Afghanistan through this transition and beyond in combating terrorism, preserving the progress of the past decade, and creating a stable, united, and prosperous Afghanistan. Mr. President, terrorism remains a grave threat to security and stability everywhere and extracts a heavy toll of innocent lives around the world. From Africa to Asia, we have seen several manifestations of this menace in the last few days alone. State-sponsored cross-border terrorism is of particular concern to India, also on account of the fact that the epicenter of terrorism in our region is located in our neighborhood in Pakistan. Speaking from this podium yesterday,
Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan spoke of making a new beginning. I reciprocate his sentiments. Looking forward to meeting him tomorrow. India is committed sincerely to resolving all issues with Pakistan, including the issue of Jammu and Kashmir, through bilateral dialogue on the basis of the Shimla Agreement. However, for progress to be made, it is imperative that the territory of Pakistan and the areas under its control are not utilized for aiding and abetting terrorism directed against India. It is equally important जी दोस्तों, ये मैंने आपको अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिखाया। ये भी इंडिया का ही प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये नहीं था, ये इंडिया का प्रधानमंत्री था, लेकिन ये युद्ध की बातें नहीं करता था। अच्छा, इसका कारनामा क्या है? इंडिया वालों पर इसने आज इंडिया में अगर कुछ है तो ये इस शख्स की वजह से है। इसने ये वो शख्स है जिसने इंडिया की बेस बनाई, इंडिया की बेस बनाई। आज इंडिया ने जो थोड़ी बहुत तरक्की की है इस आदमी की वजह से की है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इकोनॉमी क्या। ये वो शख्स था जिसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इनमें लाई, जिसकी वजह से इंडिया ने कुछ तरक्की की। फिर सबसे बड़ी बात थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसने इंडिया में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाए, किसानों को मरहात दी, उनको कर्जे दिए और इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा किया इस आदमी ने, मनमोहन सिंह ने। आई सैल्यूट मनमोहन सिंह, आई थिंक ही वॉज अ ग्रेट लीडर। तो इंडिया की जो अच्छी बात है उसको मैं अच्छा कह रहा हूं। आगे से आप जो इंडिया के मेरे दोस्त हैं, यार मेरी बात सुनो, ये नरेंद्र मोदी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मुझसे पूछा है एक दोस्त ने, व्हाट इज माय एजुकेशन? आई हैव 3 मास्टर डिग्रीज फ्रॉम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आई हैव अ मास्टर डिग्रीज इन पॉलिटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। आई हैव अ मास्टर डिग्री in international relation from University of Peshawar, and I have a master degree from AST in history. Okay, I have 3 master degree. So यार चलें, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने शुरू में कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ओके, अगर आप ये कहते हैं तो आप खुश हो जाइए। We cannot tolerate that nothing is said about India. मैं आपको इंडिया का ही दिखा रहा, पाकिस्तान का भी दिखाऊंगा। मैंने आपको अभी मनमोहन सिंह दिखाया, मैं आपको आपका जो ये मनमोहन सिंह को आपने देखा, वो गुफ्तगू कितनी प्यारी गुफ्तगू कर रहा है। मनमोहन सिंह को बात करने का सलीका तो है, कम से कम उसे बात करने का तरीका तो आता है। यूएनओ में वो स्पीच कर रहा है, तुमने सुनी ही नहीं, आप लोगों ने सुना ही नहीं मनमोहन सिंह क्या कह रहा है। वो इंडिया का प्रधानमंत्री था और उसके मुकाबले में ये भी इंडिया ही का है। ये वाला, ये मैं आपको फिर दिखाता हूं, जरा ऐसे गौर से देखो, ये भी इंडिया का है। उसके बाद में पाकिस्तान का, इसका भाई पाकिस्तान में है आजकल, देखें, इसका भाई है शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, ये एक ही नस्ल के हैं, मिलते जुलते ही हैं। तो वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और पाकिस्तान का बेड़ा। मैंने शुरू में कहा कि इंडिया के लिए पाकिस्तान से युद्ध की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी खुद ही तबाह करेगा। नरेंद्र मोदी इंडिया को तबाह कर चुका है। इंडिया में हेटरनेस इसने बनाई है, ये सिखों को भी गालियां देता है, ये मुसलमानों को भी गालियां देता है नरेंद्र मोदी। आपने देखा मनमोहन सिंह ने तकरीर की सुलझे हुए अंदाज में, उसने कहा हम पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती चाहते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो दोस्ती चाहते हैं। मैं तो कहता हूं मैं इंडिया से दोस्ती चाहता हूं और इंडिया वाले आगे से मुझे गालियां दे रहे हैं। इंडिया वालों को फूल दे रहा हूं, इंडिया वाले मुझे कांटे दे रहे हैं। मैं इंडिया वालों को अच्छा मशवरा दे रहा हूं और इंडिया वाले आगे से मुझे गालियां दें, ये मुनासिब नहीं होता। इंडिया ही में कुछ अच्छे लोग हैं। अच्छा, 71 में इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान के साथ लड़ी थी, बट आई लाइक इंडिया फॉर इंडिया।
Indira Gandhi was a best India ever produced. Indira Gandhi was one of the best India has ever produced. अच्छा, शफात मंजर नहीं माने या ना माने, शफात मंजर देखें, ये माने या ना माने इनकी बात नहीं है। हिस्ट्री जो है वो हर चीज को आईना दिखाती है। ये असल में ये इंडिया की फिल्में देखते हैं, इंडिया में फिल्में बहुत बनती हैं, तो वो मैंने भी देखी हैं कुछ फिल्में, वाकई वो फिल्मों ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। ये समझिए इन्होंने पिछले दिनों फिल्म बनाई, अच्छा इन्होंने ये फिल्म बनाई, उसका नाम था पद्मावती। पद्मावती एक फिल्म बनाई। अच्छा, उसमें जो लड़की थी उसका नाम था वो पद्मावती जो थी उसका नाम मुझे भूल जाता है यार, दीपिका। दीपिका पडुकोण उसमें बनी हुई थी पद्मावती, और अलाउद्दीन खिलजी का करेक्टर उस फिल्म में किया, उसका नाम था रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने फिल्म बनाई, और इन्होंने अलाउद्दीन उसमें बहुत ही बुरा दिखाया कि वो, आप उस वो मैंने भी देखी। मेरे एक दोस्त ने कहा जी कि ये फिल्म ज़रूर देखनी है, मैंने वो फिल्म देखी, और मुझे पता है कि वो वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने दिखाया कि वो पद्मावती पर वो करता है, और पद्मावती पद्मावती खुद अलाउद्दीन से मोहब्बत करती थी, और वो चाहती थी कि अलाउद्दीन उससे शादी कर दे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी नहीं की। यहाँ पर उन्होंने फिल्म में कुछ और ही दिखाया है, इन्होंने पता नहीं है कि कैसे वो कहानी लिखी। वो अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी को विलन बना के पेश किया। और एक और है, उसका नाम क्या है इंडिया का, वो पद्मावती से जिसकी शादी होती है, वो एक महाराजा दिखाया, तो उसका नाम मुझे नहीं आता, वो इंडिया का, वो भी एक्टर, इंडियन एक्टर है, अब सबके मुझे नाम नहीं आते। तो इन्होंने उस फिल्म में सब कुछ झूठ दिखाया, फिल्म में सब कुछ दिखाया। फिल्म में दिखाया कि अलाउद्दीन खिलजी को बुरा करके दिखाया कि वो गंदा आदमी है, उसका किरदार अच्छा नहीं है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने इसका जो पद्मावती थी, इसका जो शोर था वो बहुत गंदा आदमी था, और उस औरत ने कहा कि मेरे शोर से अलाउद्दीन खिलजी से उसने रिक्वेस्ट की, उसने अलाउद्दीन खिलजी को ये खत लिखा कि मेरी इससे जान छुड़ाओ, मुझसे तुम शादी कर लो। पद्मावती ने अलाउद्दीन, मुझसे शादी कर लो, इस आदमी से मेरी जान छुड़ाओ। इन्होंने जो फिल्म बनाई पद्मावती, इन्होंने देखी होगी इंडिया वालों ने, उस फिल्म में उन्होंने कुछ और ही दिखाया। फिल्म में ये दिखा रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत ही जालिम आदमी है। ये इंडिया वालों ने ये फिल्म बनाई है। अब ये कहता है नरेंद्र मोदी, अपनी स्पीच में नरेंद्र मोदी कहता है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपको पता है जब सबक सिखाते हैं, जब ये लड़ाई करते हैं, अभिनंदन को जानते हो या नहीं जानते हो? इंडिया वाले जो मुझे देख रहे हैं, अभिनंदन कौन था? वो इंडिया का था या कहीं और से आया था? वो वाज अभिनंदन। तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा तो बड़ा जो मूंछों वाला था अभिनंदन, वो कहते हैं हम घुस के मारेंगे। वो पाकिस्तान में घुसे तो फिर क्या हुआ? अभिनंदन को, हम तो फिर भी हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम पठान है, हमारा दिल बड़ा होता है। हमने अभिनंदन को भी फंटेस्टिक कप ऑफ टी पिलाया। आपने देखा, इंडिया वाले कहने लगे कि हमने पाकिस्तान में यह कर दिया। इंडिया के, अच्छा इंडिया के चैनल्स पे इनके एंकर और एंकरियां जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं जिस तरह ये गुफ्तगू करते हैं इनके एंकर और एंकरियां, इंडियन चैनल देखो, मैं तो सारे इंडियन चैनल देखता हूं, इनको इंडिया का पता ही नहीं है। असल बात यह है कि ये जो बकवास कर रहे हैं, असल बात बता रहा हूं, मैंने सच्ची बात बता रहा हूं, लेकिन इन्हें इंडिया का मैं तो इंडिया के बारे में जितना मुझे पता है, इनको इंडिया का पता ही नहीं है। इंडिया है क्या? आई नो व्हाट इज रियल इंडिया, I never know everything about India. Even these people don't know. Someone who is living in Delhi, he don't know what is going on in Nagaland. People who are living in Bangalore, they don't know what is going on in Assam. They don't know India. I know what is going on in Karnataka. They don't know where is Himachal Pradesh. These are Indian, but they are brainless because they have a prime minister like Narendra Modi. And the which country is ruled by a man like Narendra Modi, there it will be happen.
These are Indian. These don't know what is going on in Arunachal Pradesh. These are Indian. They don't know what happened in Kashmir. Last week there was election in Kashmir, and you know, National Conference won the election. Farooq Abdullah won the election in Kashmir, and they are claiming Kashmir is all. So these people can't face the truth. Don't want to. These are. That is why they are talking like this. I am speaking truth. I am not justifying the lies. मोदी को हमने मोदी के हवाले से मैंने आपको कहा कि ये देख लो मोदी को, इसकी शक्ल देखो, मोदी की शक्ल। अच्छा लेकिन मैं तो पठान हूं, 6 फीट 2 इंच मेरी हाइट है। बाकी भी ये देख लो, यू कैन वॉच मी, मेरी शक्ल से ही नजर आ जाता है मैं कौन हूं। हमने इंडिया पर 700 साल हुकूमत की। अब इसमें यह हिस्ट्री है, इसे तुम झुटला नहीं सकते। मैंने अभी तुमसे कहा भी कि तुम्हें पता है, महमूद गजनवी की बात करो, अहमद शाह अब्दाली की बात करो, जिसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करो, नादर शाह की बात करो, अहमद शाह अब्दाली की बात करो, अलाउद्दीन खिलजी की बात करो, ज़हीरुद्दीन बाबर की बात करो, और तुम्हारा जलालुद्दीन अकबर तो तुमने अपना अबा बना लिया था। उसने तो उसकी मैं नहीं बात करना चाहता। अच्छा, जलालुद्दीन अकबर की भी वो पुरानी फिल्म देख लो, मुगल आजम भी देख लो। तुमने फिल्में देखी, तुम्हारा जहन बनता है तो चलें अपनी कोई फिल्म तो काम की देखो, खुदा के बंदो, और कोई फिल्म ही अच्छी सी फिल्म भी बना दो। अच्छा, मोदी की बात में इन्होंने फिल्म बनाई पीके, वो फिल्म भी मैंने देखी। एक फिल्म बनाई है इन्होंने थ्री इडियट्स, वो वाली फिल्म भी देखो, उसमें तुम्हें तुम्हारा चेहरा नजर आएगा। असल में ये हमारे दोस्त हैं, इंडिया वाले, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं है। बच्चे थोड़ी बहुत शरारतें करते हैं तो हमारा बड़ा दिल है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। बाकी मज़हब के हवाले से मैंने बात नहीं की, मैंने हिंदू धर्म के हवाले से मैंने बात नहीं की, और ये इस्लाम को गालियाँ दे रहे हैं। हालांकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए। अच्छा, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सब दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है, हमारी गपशप लगी रहेगी। अभी तो इंशाल्लाह देर तक हमारी गप चलेगी। सब दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बहुत से दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपने ना चैनल को सब्सक्राइब किया, ना लाइक किया, ना शेयर किया। 300 व्यूअर्स से अब 93 हो गए हैं, तो व्यूअर्स भी कम, अब 130 हैं, 130। पहले 300 थे, तो मज़ा तो तब होगा कि 500 व्यूअर्स होंगे, कम से कम 500 व्यूअर्स वो तब होंगे जब आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो तब बात बनेगी। तो सब दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको बात करता हूँ, इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। लड़का था, बॉडी बिल्डर था, एक जिम में वो करने गया, तो मैंने उसकी वीडियो देखी, ये 3-4 साल पहले। उसने गाय का गोश्त खा लिया। ये इस बात का मुझे जवाब दें, उसने गाय का गोश्त खा लिया, और गाय का गोश्त इंडिया वालों को पता लगा कि ये गाय का गोश्त खाता है, तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से इतनी बेदर्दी से उसे कत्ल किया। उसकी वीडियो है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। तो हम मुसलमान हैं, हम तो गाय का गोश्त खाते हैं। हम तो इंडिया वालों को कहते हैं, हिंदू को, तुम भी गाय का गोश्त खाया करो। ये नहीं खाते, ये कहते हैं गाय हमारी माता है। तो मैं इनसे पूछता हूं, अगर गाय तुम्हारी माता है तो तुम्हारे पिताजी कौन है? अगर काऊ माता है तो पिताजी कौन है इनका? मैं, हालांकि मैं इंडिया में, मैं हिंदूज मेरे पास दोस्त हैं, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता। भाई जाहिर है, जिसकी माता काऊ माता है तो उसका बाप कौन होगा? आप ही बता दें, मैं नहीं बताता। हम गाय का गोश्त भी खाते हैं, गाय का दूध भी पीते हैं। मैंने आज भी गोश्त ही खाया है। मैं तो पठान हूं, हम तो गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं।
हमें गोश्त लगता ही बहुत अच्छा है, गोश्त का जायका ही इतना अच्छा है, और गाय का गोश्त होता ही सबसे अच्छा है। गाय का गोश्त हम बहुत ही ज्यादा खाते। देखें, हम गाय का पोर्क हम नहीं खाते, नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम पोर्क नहीं खाते, हम मुसलमान हैं, हम गाय का गोश्त खाते हैं। और गाय का ओके, अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी, वो नेटवर्क का मसला है। नेटवर्क देखें, मैं तो आपको भी कहता हूं, आप सारे भी गाय का गोश्त खाया करो। गाय का गोश्त खाओगे तो तुम्हारा कद भी लंबा होगा, बॉडी भी मेरी तरह होगी, स्ट्रांग होगी। ये देखो, मैं गाय का गोश्त खाता हूं, ये देखो मसल, देखो मेरे कैसे मसल्स हैं। ये देखो, गाय का गोश्त खाते हैं तो उसके मसल्स, ये देखो मैं आपको अपने मसल्स भी दिखाता हूं। ये देखो, पठानों के ऐसे मसल्स होते हैं। कैन यू सी? हाँ, मैं नौजवान हूँ, मैं नौजवान हूँ। कोई अच्छा, कुछ मुझे चाचा कहते हैं, कुछ बाबा कहते हैं। आई एम अ यंग बॉय, आई एम अ स्मार्ट यंग एथलेटिक बॉय, फॉर गॉड, ओ मैन, I am a young, smart, athletic boy. I am an intelligent boy, a beautiful boy. Why you are asking me, Chacha, Baba? What you are talking about? I am a young boy. Let's go ahead. मैंने आपको कि आपको मुझे इंडिया और पाकिस्तान, मैंने पहले कहा, यूज अ विजुअल लैंग्वेज, लेट्स रिस्पेक्ट। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं ये चाहता हूं, दुनिया में जंग मसले का हल नहीं होती। जरा मेरी ये बात गौर से सुनो। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, हैं। जिस तरह का डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया का है, इसी तरह का डिस्प्यूट फ्रांस और जर्मनी का भी है। फ्रांस और जर्मनी आपस में लड़ाई नहीं करते। फ्रांस के कभी किसी लीडर ने नहीं कहा कि हम युद्ध करेंगे, जर्मनी के किसी लीडर ने नहीं कहा हम युद्ध करेंगे। बिल्कुल सेम लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, दे आल्सो हैव टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं करते। दैट इज वाई दे आर डेवलपिंग देयर नेशंस। अच्छा, फ्रांस के स्पेन के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। स्पेन और फ्रांस वाले भी लड़ाई नहीं करते, वो युद्ध नहीं करते। ये नरेंद्र मोदी युद्ध करता है। ये हमारा भी दिमाग खराब किया हुआ है इस जाहिल ने, इस बेवकूफ ने। हर रोज ये पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है। पहले इसने युद्ध किया तो मैंने कहा, वो अभिनंदन को भेजा, हम भी फंटास्टिक कप ऑफ टी पिलाया और उसे वापस किया। देखें, इसने युद्ध किया, उसने कहा कि हम युद्ध करेंगे, और युद्ध करने के लिए उसने मैग 29 वो एयरक्राफ्ट भेजे, और अभिनंदन आया, उसने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया। ये मैं गलत कह रहा हूँ? स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तानियों ने उसे पकड़ लिया, और आपका इंडिया का मैग 23 पाकिस्तान आया, पाकिस्तानियों ने गिरा दिया। एक और गिराया, एक मैग 22 था, और एक मेरे ख्याल में वो इंडिया के जो अपने त्यारे बनते हैं, मुझे उसका नाम ही भूल गया, उसके त्यारा भी गिरा दिया। और आप सब ने टेलीविजन पर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने अभिनंदन को पकड़ा, उसे फंटेस्टिक कप ऑफ टी पिलाया, और 3 दिन के बाद इंडिया के वाघा बॉर्डर से पार इंडिया वालों के हवाले कर दिया। ये कहता है नरेंद्र मोदी, हम पाकिस्तान को घुस के मारते हैं। तो तुम बताओ, तुमने पाकिस्तान को कैसे घुस के मारा? नए बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। वो बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। अब वो बात नहीं है। तुम ठीक कहते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड। यू आर राइट, वी लॉस्ट इन 1971, यू वॉन, वी रिकॉग्नाइज ट्रूथ, यू वॉन इन 1971, you won, I recognize. But what happened with Abhinandan? You tell me what happened with Abhinandan. Pakistani soldiers surrendered in Bangladesh because our Bengali brother was not ready to live with Pakistan. That is the reason that you won. But now you can't won.
Now you can't go on. In 1971, you won because Bangladeshis were not ready to live with Pakistan. That is why we lost. This is the reason. Nandan, what you are talking about, what Shah Mahmood Qureshi said in the parliament, oh man, oh man, oh man, I am asking you that Abhinandan attacked on Pakistan. He was a man from Indian Sena, not from Pakistan. Indio Vayu Sena. He belonged to Indian Vayu Sena. We captured him, we arrested him, and then after giving him a fantastic cup of tea, we turned him back. India attacked. Why India not attacked? India attacked. India can't attack because Pakistan is much powerful than India. India can't fight with Pakistan. Pakistan is much powerful than India. पाकिस्तान इंडिया का बात है, इंडिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, कैसी बात करते हो यार। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त युद्ध की बात ना करो, मैं कह रहा हूं युद्ध की बात को स्टॉप करो, स्टॉप इट। मैं खुद कह रहा हूं कि वी डोंट वांट वॉर विद इंडिया। I am asking you, we want friendship with India. Why you are insisting again and again, war? Yes, sugar Kumar, that is right way. Spread love. That is the way. Now, Albert Einstein, what is your name? You say you are Albert Einstein, and I think you are the worst stupid and idiot I have ever seen. What you are talking about? How you know Pakistan is bankrupt? False. This is your false propaganda on Indian media. What Indian media is showing you, that is not correct. What you watch in Bollywood movies, that is not correct. I am telling you the facts. आपको इंडिया वाले जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको तबाह करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। आपने इसकी कदर नहीं की। राहुल गांधी, हु इज राहुल गांधी? राहुल गांधी was grandson of Indira Gandhi. I have a great respect for Indira Gandhi. I respect Indira Gandhi. You know why? Well, watch. She is a leader. Watch, I am showing you. She is a leader. You, as a leader of a nation of 700 million people, to come visit a small nation of 4 million at the outskirts of the world. Well, I don't think any nation is at the outskirts because, after all, it's a round world. But she is a leader. We are all members, small or big, and I think we would like Norway to know more about India. We already have good collaboration with your country, but news about India is very scarce and not always balanced. And as you know, we believe that all nations should get to know one another better and cooperate more to try and solve problems. Most problems today are global problems, whether they happen to take place in India or anywhere else. The relations between Norway and India has always been good, as far as I know, but not very extensive. Should this relationship be given some concrete content? Well, we would like to. I don't know what is possible. We are aware of the details of the collaboration. We already have fisheries and so on. बड़ी लीडर थी ये इंदिरा गांधी इंटरव्यू दे रही है जरा इंदिरा गांधी को सुनिए लीडर ऐसे होते हैं annihilation through nuclear war. Should these tragedies occur, can any one of us, large, small, rich or poor, from north or south, west or east, hope to escape? As now the leader of an online movement, are you considering any concrete initiatives to get to that goal, which is a goal of all people, but very few seems to be doing something about it?
It's a goal which I think we must pursue. We must continue to pursue even if we don't seem to succeed. सब दोस्तों से As गुजारिश a है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. I will welcome all friends who are watching me from whether you are from India or Bangladesh or whether you are living or residing in any part of the world. IS Khan Official is your voice. IS Khan Official is your own digital channel. Please all friends subscribe the channel and share with your friends. Thank you. And Are any concrete initiatives being considered? well, except that we appeal to them, and I don't think we can do very much more at this stage. But I think if public opinion grows, that does have some effect. Manzar, you are right. Thank you so much, Shahbaz Manzar. मैं सब दोस्तों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ. बाद में जरा इंदिरा गांधी साहबा का ये इंटरव्यू सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ. And also the nuclear-free zone idea, which is being considered in this part of the world, but also in Europe. Well, I don't think it makes. I think the freeze should be total, really, not just in one zone or another. So you don't think it's a good idea to start with certain areas, so you could at least say that, well, we have excluded it from this area? You can't really exclude it because if it's a nuclear bomb falls next door to the area, you don't know which way the wind will blow the radiation. All this talk about disarmament, including in the non-aligned movement, does not prohibit the fact that you are in a certain arms race with Pakistan. Well, if we could avoid war, we certainly are very much for peace, and we have never invaded or threatened another country. But unfortunately, we ourselves have faced aggression 5 or 6 times. And with that experience, we have to be ready to defend our frontiers and our people. But we spend very little compared to the size of our country or population, of our land and sea borders. We spend very little on defense. And when Pakistan suddenly jumps a decade ahead of us, we have to try to make up at least a portion of that. They jump a decade ahead. Are you referring to nuclear arms? Well, no, ordinary arms, the conventional arms. Although there's much talk of their going in for the nuclear, which they have so far denied. We of the developing world have no margin of safety. We shall be the first and the worst sufferers in any economic breakdown. In this interdependent world, where you cannot stir a flower without troubling a star, even the most affluent are not immune to such disturbances. Only with coexistence can there be any existence. At the Non-Aligned Summit, one other important aspect was the North-South dialogue, where the conference more or less said it's dead or a non-starter. What can you do in order to get it started? Well, several initiatives have been taken, Cancun and so on. It's true, nothing much has come out of it. But I think that more and more countries in Europe are realizing that it must come about in some form or another. That is why we have said that while, we are global negotiations, but we could have it in 2 phases. Start off with certain things which are of more immediate concern. And that is why we have suggested a conference on money and finance, for instance. What do you think are the prospects for that? It doesn't seem to have been very much a positive reaction from the Western countries. Well, it hasn't been opposed, so far as I know. By the way, if I may go back on the nuclear question, I'd like to make it very clear that we ourselves have no nuclear bombs or anything, and we don't propose to make any. Now, I'd like to keep to this North-South thing a little bit, because what means do the Third World really have at its disposal to force the industrialist countries into doing something, into entering the dialogue? If we were more united, I think we could do a great deal. The industrialized countries need our markets, they need our raw materials. At the moment, their policy is rather two-faced. On the one hand, they say, well, we must have freer trade. They put up barriers.
And now, if our people don't have purchasing power, then where will most of these countries sell the goods they want to make? But why should the industrialized countries enter a dialogue? At the moment, it seems they are only losing by this dialogue. No, I think they're losing if they don't enter into the dialogue, because as I said, that economies are linked if you look into the future, not just the immediate. But even immediately, there's hardly a country which doesn't have an economic crisis. Now, how are they going to solve it? It's obvious that the present economic system or the institutions that were built up to solve problems have proved to be quite inadequate. So something new has to be thought of. You have proposed that as many as possible of the world leaders should participate in the UN General Assembly this September. What would the purpose be of such a gigantic summit? Well, perhaps it was a bit idealistic, but the real purpose was that if you really got together, it generates an atmosphere, and when people are feeling depressed all over the world, it generates hope. And also by talking about one another's problems and possible solutions, sometimes you can hit upon something which will be can be agreed to by most people. Have you had any indications at all of replies to this proposal? Well, very vague so far. We regard non-interference and non-intervention as basic national behavior. Yet different types of interventions, open or covered, do take place in Asia, in Africa, in Latin America. They are all intolerable and unacceptable. Interference leads to intervention, and one intervention often attracts another. No single power or group of powers has the justification or moral authority to so interfere or intervene. But you cannot condemn one instance but condone another. At the Non-Aligned Summit, you got a mandate to follow up the Iran-Iraq war. Have you considered anything concrete? Well, I don't know what you mean. You see, in this world, very few things are black and white. Most things are somewhere in the middle. We're in touch with both the governments. I can't say that anything very much has emerged. One non-aligned country that have seen an intervention is, of course, Afghanistan. And many people in the West find your position ambiguous. Would you like to explain this position? I think our position is quite clear. We are opposed to interference of any kind, and especially by troops. But we find that such intervention has been taking place in Asia and Latin America. It still is taking place. And very little is said about these. I mean, we know that governments have been removed and puppet governments have been put up and so on and so forth. So it seemed to us that just to pick on one country was not realistic. Also, that the manner in which it was done, I think, aggravated the situation instead of helping it. Because I've no doubt that with this world hue and cry, the Soviet Union would feel threatened and surrounded and therefore want to dig in their toes even more. The same applies to a certain extent to Cambodia, where your government is supporting the Heng Samrin government installed by Vietnamese intervention. Does this amount to a certain, what you might call, anti-American, anti-Western bias in your foreign policy? Not at all. Now, our sympathies have been with Vietnam, as they are with any country that is ruled by foreigners. The Vietnamese fought very bravely against the French, and soon after that my father and I visited Vietnam. And immediately afterwards the Americans got involved. What for? I mean, they had no business being there. So there we were against American intervention. Now, what did they and the ASEAN countries and countries like Australia, New Zealand, they said, we are fighting here to save India.
जी दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया जो मेरे इंडिया के दोस्त हैं। ज़रा आपकी भी यादें माजी के झरोखों में आदमी झांके तो वैसे भी किसी दानिशमंद आदमी का ये कौल है कि माजी से सबक हासिल करें और जो आपका प्रेजेंट है उसमें अच्छे काम करें और अपने फ्यूचर को आप इस तरह अच्छा बना सकते हैं। कौमों की ज़िंदगी का यही बात होती है कि कौमों को चाहिए कि एज ए कौम अगर आपने दुनिया में तरक्की करनी है, आपने दुनिया में आगे बढ़ना है, तो उसका यह तरीका है कि आप पास्ट को स्टडी करें, पास्ट से सबक हासिल करें, लर्न फ्रॉम योर पास्ट और अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करके प्लान करके काम करें। इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर थी। इंदिरा गांधी एक उसके पास विजडम भी थी, अकल भी थी और इन इंडिया वालों ने उसे मार दिया। इससे पहले इन्होंने गांधी जी को भी मार दिया। गांधी जी को, वो अमन का पैगंबर था, उसको भी मार दिया। वो अमन का पैगाम लेता था। आगे बढ़ते हैं। जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सब दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले काफ़ी सारे दोस्त थे, कम हो गए हैं, तो अभी मैंने आपको बहुत ख़ास चीज़ दिखानी है। मैंने आपको अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी हैं। तो सब दोस्तों से यह मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर पे इंडिया वालों से। इंडिया वाले मेरे जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, आपको, आपके लिए ये आज का ये जो लाइव स्ट्रीम है, ख़ास तौर पे आज मेरा अहम टॉपिक इंडिया ही रहेगा। मैंने इंडिया की बातें करनी है क्योंकि इंडिया के हमारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त ये समझते हैं कि हम जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया से नफ़रत नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रियली ये बता रहा हूँ, हम इंडिया के साथ युद्ध नहीं चाहते। लेकिन आपका ये जो लीडर है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए शहबाज शरीफ काफ़ी है। पाकिस्तान को इंडिया से युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान को बर्बाद ही करना है तो हम बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को। हमने शहबाज शरीफ जैसा, ये नरेंद्र मोदी को और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने कहा देयर आर समथिंग विच आर कॉमन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया वाले भी ऐसे लोगों को अपना लीडर बना लेते हैं। इंडिया वाले ऐसे वोट देते हैं, ऐसे शख्स को अपना लीडर बनाते हैं जो कि बिल्कुल जाहिल है और जिसका काम क्या है, इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाना। यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात का, ये इंडिया का वजीर आला था, गुजरात क्या इंडिया में है या पाकिस्तान में है? अहमदाबाद इंडिया में है या पाकिस्तान में है? अहमदाबाद इज इन इंडिया और इन पाकिस्तान? What happened in Ahmedabad when Narendra Modi was chief minister of Gujarat? What happened there? देखें, इसने इंडिया में, गुजरात में क्या हुआ आपको भी पता है। इसमें जो सच है वो सच है। What happened in Ayodhya? Why you destruct Babri Mosque? Why you destruct Babri Mosque? We did not destruct any temple in Pakistan, any church in Pakistan. No, not at all. Here in Pakistan, there are very little population of Hindu people. They are living in Sindh. They are living peacefully. No problem. They don't have any problem. They are enjoying their life in Pakistan. Hindus are richer than Pakistan. Hindus are richer than Pakistan. Hindus are richer than Muslims in Pakistan. Yes. Hindus are on high status. They are on executive posts. So many doctors, engineers, Hindus, they are working in Sindh. In my area here are not Hindus. Some Hindus are living near. So many Hindus, they are living in district Tharpaka, in Badin, in Mirpur, in Sindh. They have equal right. But in India, Muslims are not safe. Why? The reason, Narendra Modi. See, watch.
दिस इज नरेंद्र मोदी। वो आज देखिए, ये है नरेंद्र मोदी। इसका बात करने की इसकी शक्ल देखिए। अच्छा, इसकी शक्ल भी ऐसी है और इसकी अकल भी ऐसी है। इसके दिमाग में बिल्कुल खाली है, ये अंदर से बिल्कुल खाली है। हर बात में कहता है युद्ध करेंगे, केवल युद्ध करेंगे, केवल युद्ध करेंगे। ओ भाई, युद्ध दुनिया में मसलों का हल नहीं होता। जंगों से मसले हल नहीं होते, जंगों से मसले बढ़ते हैं। लेकिन ये जाहिल आदमी ये समझता है। और दूसरी बात, इसके दौर में ये इंडिया का प्रधानमंत्री बना तो चाइना ने इंडिया का 4 किलोमीटर एरिया खींच लिया। आपको पता है फोर फिंगर कहां गई? वेयर आर फोर फिंगर? डू यू नो व्हाट हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश? You know your 7 sister will be separated from India. There will be no India. There is only 20 kilometers gap between Bangladesh and China. And if China blocked chicken neck, you can't go to 7 sisters. If China, and this is not difficult for China. China can do it. China is capable. China is strong, and China can do it. चाइना ने आपसे आप 5 फिंगर छीन ली। चाइना ने आपसे लद्दाख छीन लिया। चाइना ने आपसे 5 फिंगर छीन ली, ले छोड़ दे, छीन लिया। तो वहां तो तुम बिल्ली बिल्ली बन गए, वहां तो तुमने सर झुकाया हुआ लोमड़ियों की तरह। वहां तुम युद्ध नहीं करते, करो ना युद्ध। वहां युद्ध नहीं करते। तुम्हें ले दे कि पाकिस्तान मिलता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करो। अरे बाबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शफात मंजर आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल हमारे पड़ोसी हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई बात। शफात देखें शफात चलें, कोई बात नहीं है। आप नाराज ना हो शफात, आप नाराज ना हो। इंडिया वाले हमारे बेटे हैं, कोई बात नहीं है। बच्चे हैं हमारे, शरारत करते हैं, कोई बात नहीं है। हैं तो हमारे बेटे ही हैं ना। अब ये हमारे बेटे हैं तो ये इनकी ये बदकिस्मती है। देखो, मैं तो इंडिया को कहते हैं कि तुम अपने पिताजी की इज्जत किया करो। गिव रिस्पेक्ट टू योर पिताजी। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बेटे हो। जब भी तुम पे कोई मुश्किल पड़ती है, हम तुम्हारी हमेशा मदद भी करते हैं। तो इसलिए ऐसी शरारतें ना करो। अपने बाप को इज्जत देते हैं, अच्छे बच्चे अपने बाप को इज्जत देते हैं। इंडिया हमारा बेटा है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारा बेटा है, ये इस शख्स को, ये जरा देखो ये बात कैसे कर रहा है। जरा देखो इसकी शक्ल देखो, ये देखो जरा, ये देखो। ये इनका प्रधानमंत्री है। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर बेघर, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। इससे बड़ा झूठा शख्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये देखें, इससे बड़ा झूठा शख्स मैंने तो नहीं देखा। की सेवा करते हुए ये जरा देखो, साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अल्लाह, डेमोक्रेसी इसकी एक्टिंग देखो इस खबीस की, और इसकी बात करने का तरीका देखो। ये बात कैसे कर रहा है। ये युद्ध करता है, ये केवल युद्ध करता है। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अर्थात स्व से समष्टि तक विकास और विस्तार की सहयात्रा। एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, मूविंग फ्रॉम individual to the society, the nation and entire humanity। और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में where no one is left behind कहा जाता है। इसी भावना के साथ भारत आज इंटीग्रेटेड,
इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास सर्वसमावेशी हो। अब मुझे हमें दुख इसलिए होता है, मैंने कहा हमारे तो इंडिया वाले हमारे बच्चे हैं। देखें, इंडिया हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, पाकिस्तान का ही बच्चा है। तो हम जब देखते हैं हमें इस बात का दुख होता है कि इन्होंने, इंडिया वालों ने इस शख्स को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। अब ये कहता है कि इंडियन सेना का उल्लंघन होता है। इंडिया का उल्लंघन हुआ है 5 फिंगर्स में। चाइना ने इंडिया का 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया से छीन लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। अब ये किसका, इंडियन सेना का उल्लंघन किया है। और इंडियन सेना अपने भारत देश की रक्षा नहीं कर सकी, भारत माता की रक्षा इंडियन सेना नहीं कर सकी। इंडियन सेना का उल्लंघन हो गया चाइना के हाथों। और ये बार बार कहते हैं युद्ध 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 पाकिस्तान के साथ। अच्छा, और ये पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं। ऐसे नहीं होता। मैंने इनको इंदिरा गांधी दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सा लीडर है। लीडर हो, ऐसा लीडर हो। देखें, पाकिस्तान का भी मैंने इनको कहा, पाकिस्तान में भी है कैसा, पाकिस्तान का आज का जो प्रधानमंत्री है गंदा आदमी है, वो भी बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह है। उसे बात करने का तरीका आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों की तादाद कम हो रही है, तो मैं चाहता हूं जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं ये चाहता हूं इंडिया में या पाकिस्तान में अच्छे लीडर हों, ऐसा लीडर हो जो इंडिया के अवाम को धोखा ना देता हो। इंडिया में ऐसे लीडर आप लोगों ने बना दिए हैं जो इंडिया वालों को धोखा देते हैं। क्वीन, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच क्वीन, यू आर वेलकम। इंडिया में ऐसे लीडर हैं, क्वीन और दूसरे दोस्त भी जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत से दोस्त हैं जो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किया। देखें, आपका लीडर मेरे दोस्तों ऐसा होना चाहिए जो अपने मुल्क के अवाम से झूठ ना कहे, अपने मुल्क के लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। मैंने शुरू में आपकी खिदमत में कहा, मैंने आपको कहा, ये एक अंग्रेज़ी की एक कोटेशन है, द पर्सन हु ट्राई टू फूल अदर्स हिमसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फूल इन द वर्ल्ड। कोई भी आदमी जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। फिर जो बंदा झूठ बोलने वाला होता है उसे दूसरे झूठे नजर आते। जो शख्स, देखें, जैसा आदमी होता है उसे दूसरे लोग उसी तरह से नजर आते हैं, जैसा वो खुद होता है उसे दूसरे वैसे ही नजर आते हैं। अब एक और मैं आपको अब्राहम लिंकन का मैंने आपको बताया था कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। बाज़ औक़ात आप कुछ अरसे के लिए अपने ही दोस्तों को ही बेवकूफ़ बना सकते हैं, और आप बेवकूफ़ उसको बनाते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप उन लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। और इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई नहीं है कि एक शख्स जो आप पे ट्रस्ट करता है आप उसे बेवकूफ़ बनाएं। अब इंडिया के अवाम ने इस मोदी पर ट्रस्ट किया, जबकि मोदी जितना गंदा आदमी पूरे इंडिया में है नहीं। यही बात इंडिया में काफ़ी अरसे से चली आ रही है, और मनमोहन सिंह को इन्होंने पसंद नहीं किया। अभी मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की आपको वो भी दिखाई, मैं दोबारा दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया यूएनओ में मोदी ने तकरीर की, उसने कैसी बातें की। फिर मैंने आपको इंदिरा गांधी को भी दिखाया। अब मैं आपको एक ऐसे लीडर को दिखा रहा हूँ कि आपका लीडर ऐसा होना चाहिए, उसकी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, उसे बात करने का भी चाहिए। अगर आप ऐसे शख्स को अपना लीडर बनाएंगे, और तो भाई उसे बात करनी नहीं आती, मतलब है नरेंद्र मोदी को बात करने का तरीका नहीं आता,
तो ऐसे शख्स को आपने इंडिया में हम इंडिया का हमें पता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद 145 करोड़ पीपल. India has a population of 145 crores. And you elected this man as your prime minister, as your Pradhan Mantri. केवल इंडिया में केवल नरेंद्र मोदी के अलावा कोई आपको अच्छा शख्स नहीं मिला. मैंने इंडिया वालों को कहा कि तुम इंदिरा गांधी का वो पोता है, राहुल गांधी को वोट दो. राहुल गांधी इज बेटर देन नरेंद्र मोदी. जैसा भी है नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छा है. वो इंदिरा गांधी का पोता है और उसे बात करने का सलीका तो कम से कम आता है, लेकिन इन्होंने नहीं. अब लीडर कैसा होता है ये जरा देखिए. लीडर ऐसा होता है, जरा ऐसे सुनिएगा, फिर मैं दोबारा आपको एक बार फिर मैं कुछ और चीजें भी अभी दिखाऊंगा. पहले जरा यह देख लीजिए. लीडर जो होता है वो ऐसा होता है. ऐसा लीडर बनाओ. इंडिया वालों, तुम भी ऐसे शख्स को लीडर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ऐसा लीडर होता है. लीडर ऐसे बात करता है. जरा गौर से देखें. और सब दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज सब दोस्त फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. एक्सेलेंसीज, IAS खान ऑफिशियल आपका अपना चैनल है, आपकी आवाज है, आपकी उमंगों का तर्जुमान है. सब दोस्त प्लीज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. at this forum of world leaders, where we have a chance to discuss problems that the world is facing. I want to talk about a lot of problems, but just 4 today. And I especially came to this forum despite a difficult time in my country, facing challenges. I would not have come, but because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. So first of all, I start with climate change. So many leaders have talked about climate change. I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. And 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. The glaciers not just on the Pakistani side, even India. The 80% of the water in Ganges and the Indian rivers also comes from the glaciers, from the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected already 5,000 glacial lakes in our mountains. And if this keeps going, if nothing is done, we are scared that humans are facing a huge catastrophe. In my country, when my party came to power in the province of KP, we planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter this, the effects of global warming. But one country cannot do anything. This has to be a combined effort
of the world. My optimism comes from the fact that humans, the Almighty has endowed humans with great powers. We can do anything, provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope that the United Nations will take a lead in this. There must be more emphasis. Richer countries must be pushed. Countries that are responsible for, mainly are responsible for emissions. They must be pushed because our country contributes minuscule amount to greenhouse gases. So I feel that the United Nations must take leadership in this. My second issue for me right now is even more critical. Mr. President, every year, billions of dollars leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world. And they find their way into Western bank accounts, offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals. Mr. President, this is devastating the developing world. This is causing more poverty, debts. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which happens because money leaves the poorer countries into rich countries, is not treated the same as, for instance, money from drugs or terror financing. The seriousness which terror financing and money from drugs, the way it is treated, it's not the same. The way the poor countries are being plundered by their elites. It's not happening. In my country, when I took charge of our government a year back, in the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years it went up 4 times. As a result, the total revenue we collected in 1 year, half of it went into debt servicing. How are we going to spend money on our human beings, 220 million people, when half the money is going into debt servicing? Because our country was plundered by the elites, the ruling elite. And easily they could get the money out. And when Mr. President, we located properties in Western capitals bought by this money through corruption and money laundering, located the properties of these leaders, we find it so difficult to retrieve it. That money, if we retrieved that money, we could spend on our human beings. But it's so difficult. The laws protecting these criminals. We do not have the sort of money to have expensive lawyers and spend millions and millions of dollars. We need help from the rich countries. And Mr. President, it's critical. The rich countries must show political will. They cannot allow this to happen. How can the poor countries spend money on human development, which the United Nations asks, SDG? How are we going to do it when this money can easily leave our countries? So, unless the rich countries intend to build walls to stop economic refugees coming as we see right now, they must take action. They must take action now.
Is the point living in other countries live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. Radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam. And that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West? And why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders. This has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in European countries, it is marginalizing Muslim communities. And we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who end up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. And my point here is that we must address this issue. I'm sad to say that we Muslim leaders have not addressed this issue either. After 9/11, when this thing came about, war against radical Islam, rather than Muslim leaders trying to explain to the West that there is no such thing as radical Islam, in all human communities, they are radicals. They're liberals and rest are moderate. All human communities, Christians, Jews, everyone has it. But Islam is not radical, neither Christianity, neither Hinduism. No religion preaches radicalism. The basis of all religion is compassion and justice, which differentiates us from the animal kingdom. But unfortunately, the Muslim leadership was so scared of being called radical Islam that all of them became moderates. In Pakistan, we were in the eye of the storm, and our government coined a phrase called enlightened moderation. No one knows what it meant, but everyone started putting on Western suits that they were moderates, started speaking. Even those who didn't know English would speak English because they were moderates. No one had a clue what it was, because we in the Muslim world did not explain to the West that there is no such thing as radical Islam. One of the reasons why after 9/11 Islam was supposed to be equated with terrorism was suicide attacks. Because the 9/11 bombers did a suicide attack, all sorts of theories came up that the Muslims सब दोस्तों से गुजारिश है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए खान ऑफिशियल पे आपने नरेंद्र मोदी को भी सुना,
आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी देखा, आपने इंदिरा गांधी को भी देखा, अब मैं आपको इमरान खान दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इंडिया से दोस्ती चाहिए, हम इंडिया से युद्ध नहीं चाहते। पाकिस्तान कभी भी इंडिया से युद्ध नहीं चाहता, इंडिया से हम दोस्ती चाहते हैं। हम इंडिया वालों से ये कहते हैं कि इंडिया वाले भी ये देखें इमरान खान है, ऐसे किसी शख्स को लीडर बनाए अपना प्रधानमंत्री। इंडिया वाले भी इमरान खान की तरह का किसी शख्स को इंडिया का प्रधानमंत्री बनाए। आपने नरेंद्र मोदी जैसे घटिया और गलीज आदमी को अपना प्रधानमंत्री बनाया है और आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हो। पाकिस्तान की क्या गलती है इसमें? नरेंद्र मोदी तुमने खुद अपने ऊपर चढ़ाया है, अब उतारो नरेंद्र मोदी को। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है IS खान ऑफिशियल। सब दोस्त भले आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या कहीं से भी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इमरान खान की जरा स्पीच को, अब उसकी स्पीच का बहुत खास हिस्सा है, जरा गौर से सुनिए, फिर बाद में इंशाल्लाह आपको इंदिरा गांधी को भी दिखाऊंगा और लाल बहादुर शास्त्री साहब। प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें। Maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there was a reaction in the Muslim world. The West couldn't understand what was the problem, because in the West, because I have spent so much time in the West, religion is perceived completely differently. They don't look upon religion like we do. And so Islam was supposed to be an intolerant religion. It was against freedom of expression. And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims, and again it was Islam, an intolerant religion. Again this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have, but the majority of the people in the West didn't understand. This is where again Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what a Prophet, peace be upon him, means to us. So in 1 minute, I'll try and explain what he means to us. A Prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. So he is the ideal we all try to get to. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state was the basis of a Muslim civilization which became the predominant civilization for the next 700 years. And what was that state? I hear such strange things about Islam, that it is against women, it's against minorities. The first state of Islam in Medina, it was the first time a welfare state was set up. The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. Thank you, Ahmed Faraj. You are welcome. Abdul Qadir, thank you so much. Abdul Qadir, you are also welcome. Abdul Qadir, Ahmed Faraj, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका थैंकफुल हूँ, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ और मैं आपका थैंकफुल हूँ। इंशाल्लाह इमरान खान की ये तकरीर जरा सुन लें। मैं इंडिया के दोस्तों को ये दिखाना चाहता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन a true leader and between a stupid like Modi. इंडिया वालों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ। बाद में जो इंडिया के दोस्त होंगे इंशाल्लाह वो भी सवाल करेंगे, हमारी इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू होगी। पहले जरा ये इमरान खान की स्पीच का बड़ा अहम हिस्सा है,
ये जरा गौर And से as a सुन लें, result, फिर बाद में something बात करते हैं। happened in a मैं इंडिया Muslim वालों world से ये कहता which हूँ, hasn't happened in इंडिया any से other जो दोस्त देख civilization. रहे हैं, मेरे Slave इंडियन dynasties दोस्तों, have लीडर been- ऐसा slaves होता became है, kings. लीडर इस तरह The गुफ्तगू Mamluks, करता है, मोदी slaves को तो became बात करने का true तरीका leaders. नहीं आता। In India, there were slave dynasties. And then, with minorities, again, you hear that Islam is supposed to be against minorities. Let me just make this clear. सब दोस्त In प्लीज चैनल को Islam, the सब्सक्राइब Prophet करें, लाइक announced करें that और जल्दी everyone जल्दी was free to ग्रुप्स में practice अपने his दोस्तों religion. के साथ शेयर कीजिए। It was a sacred duty to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. So, number one, it showed there was a rule of law, no one was above law. And number two, that a Jewish citizen was an equal citizen. So, Mr. President, when a Muslim society is unjust to its minorities, it is going against the religion of Islam and our Prophet, peace be upon him. So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had the stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. And now, the number fourth point, Mr. President, and this is the most critical point, is the reason why I especially came here. It is about what is happening in Kashmir. ये ऐसा जरा गौर से सुनिएगा। Before I go on ये this, इमरान I खान want की to स्पीच make का one thing सबसे clear. अहम हिस्सा आ रहा है। सब दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जरा पूरी तवज्जो से सुनिएगा। लीडर ऐसा My first होता priority है। was that Pakistan would be a country which will try its best to bring peace. We have, through this war on terror, we joined the United States war on terror after 2001. And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I opposed the war because in the 80s, Pakistan had joined the Western countries in what was the freedom struggle then in Afghanistan against the Soviets. And it was funded by the Western countries. These Mujahideen groups, which were treated in guerrilla warfare, were trained by Pakistan Army, funded by the Western countries and especially US, and they waged what was a freedom struggle
in Afghanistan. The Soviets called them terrorists. We called them freedom fighters. 1989, the Soviets retreated. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11, Pakistan joined the United States in this war on terror. Our government was supposed to, the reason why I opposed joining this war, because here we had indoctrinated them in jihad, meaning freedom struggle against foreign occupation. Now, because we had joined the US and the US had occupied Afghanistan, now we were supposed to tell them that no, this is not freedom struggle and jihad, it's terrorism. So that's why I tried to tell then government that, stay neutral, because you will have leverage over them. You will be able to control them. But if you join them, you become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. Taliban were in Afghanistan. Al-Qaeda was in Afghanistan. What had we to do with it? 70,000 Pakistanis died. So when we came to power, we decided that we would dismantle what was left of these groups. And this decision was taken not just by us, but by all the political parties in Pakistan. Unfortunately, they didn't implement it. So we came to power, we decided to implement it, and we dismantled what was left of the groups. And I know that India keeps accusing us that there are these groups there. I would like the United Nations to send observers, see for themselves what we've done. No Pakistani government would have dared to do this because it would have created strife. But we decided that there would be no militant organizations in Pakistan. So I need to give you this background and to what I'm going to say later on. And secondly, we started mending fences. I invited the Afghan president. We developed a relationship with Afghanistan. We had problems with Iran. We mended fences there. And then India. Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, and cricket being it's a passion in the subcontinent, I had great following in India. I have friends in India, and I loved going to India. So immediately, when my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi and I said, look, we have similar problems. Change poverty, let's get together. Let's resolve our differences through trade. Let's build a relationship on trust. Prime Minister Modi told me that, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks which we know are instigated by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbhushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. So we said, look, let's leave that behind. Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign ministers were supposed to meet on this in the UNGA last year. India cancelled it. We thought that it's their election coming up. It's a nationalist, ultra-nationalist party. It doesn't want to cozy up to Pakistan. So we thought, okay, we'll wait till the elections. Meanwhile, a 20-year-old Kashmiri boy, whose father said was radicalized by the security forces in Kashmir, blew himself up on an Indian convoy. Immediately, India blamed us. I
I spoke to the Indian public on television. I said, if you give us any iota of proof, we will immediately take action because we've clamped down on these groups. Rather than sending us any proofs, they sent their jets in, they bombed us. We retaliated. A jet, two of their planes were shot down, one pilot bailed out in Pakistan. We immediately returned the pilot, saying that, look, we do not want any escalation. Rather than taking that as a peace gesture, the entire campaign, almost the entire campaign of Mr. Modi in the election was how he had taught Pakistan a lesson that they had jets had killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, we are growing all these trees. He then the election campaign, Mr. Modi used words like, this is just a trailer, the movie is about to start. I went into Pakistan and taught them a lesson. This was their असली की ताकत लिए नया क्लेयर अब बर्तनों पर से चिक Okay, so we thought, us politicians make all these statements to win elections. So, okay, after elections, we'll get back to our normal relationship. Well, the moment the elections ended, we approached India, no response, but then we discovered they were trying to push us in the fat of blacklist to bankrupt us. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. They went against Simla Accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. Went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. They got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand how can anyone do something like this? And for that, I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of, you can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians.
because they believe that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. And Mr. President, what comes with racial superiority of Aryan superior race is arrogance. The two go together. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things. Cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are two United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, what is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think
the way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals, no rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets. And what will the soldiers do? They will shoot them. They've already used pellet guns, blinded young boys. In the last 6 years, the 5 years, the oppression that has gone on in Kashmir. And so, Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? And why would? Don't we know that the moment there is some terrorist attack, all that will happen is there will be further cruelty and oppression of the people of Kashmir. We will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. And then we'll give the Indian government an excuse that, look, Pakistan is a terrorist state, and this mantra that has gone on, Islamic terrorism. But the moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world turns away. No one talks about you can do whatever you want, which is what has happened in Kashmir, because they keep using this word, Islamic terrorism. And this is what they're doing right now. What do we benefit from further increasing the cruelty on the people of Kashmir? And why would we want this? But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They might come and bomb us again, and then another cycle might start. And what does Narendra Modi think? That 180 million Muslims of India are thinking right now. Aren't they watching these Kashmiris stuck inside for 55 days they've been stuck in? Aren't they watching? What do you think? Don't you think that the Muslims will be radicalized in India? And I'm talking about 180 million people. And when they get radicalized, there will be some incident in India somewhere down the line. Again, we will be blamed. And I'm warning you right now, again we will be blamed. And Mr. President, what about 1.3 billion Muslims? And they know that it is only happening in Kashmir because they're Kashmiri Muslims. This is not happening to Kashmiri Hindus. They know that this is happening because of their religion. So what do you think they will be thinking? What do you think the Jewish community would think if they were, forget 8,000 Jews stuck like this? What do you think Europeans would think? What do we think? I mean, any human community, if their members are stuck like that, what do you think they will think? Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. This good, decent guy doesn't get justice. He decides to pick up a gun and start seeking justice. There was a film made in New York, famous film called Death Wish. This guy gets mugged by his
his wife gets killed or something, he can't get justice. He picks up a gun and he goes around shooting muggers. And the whole cinema cheers him on. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, but because of what they will see, that there's no justice when it comes to Muslims. There were Rohingya Muslims, Myanmar, who are, God knows, almost 1 million people out, ethnic cleansing. What was the response of the world community? So what do you think will be the response of 1.3 billion Muslims? I pictured myself. I'm in Kashmir. I've been locked up for 55 days. I've heard about, and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. When people lose the will to live, what is there to live for? And this is what, if you can do this to human beings, you are actually radicalizing people. And so, Mr. President, I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. 2 nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. I feel we are back to 1939, Munich. Czechoslovakia has been taken, annexed. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If it goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the 2 countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a... आज की शाम हम Excuse me. What is this happening? Rubbish, nonsense. Hello.
जी दोस्तों, ये मैंने ज़रा लंबी स्पीच आपको सुनाई, आप कुछ बोर हो गए हैं शायद, लेकिन बोर नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान की स्पीच थी, ये मुकम्मल सुनानी थी भी बहुत ही ज़रूरी। इसलिए ज़रूरी थी कि मैं अपने इंडिया वाले दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता था कि आपने जिस शख्स को लीडर बनाया वो था नरेंद्र मोदी। मैंने आपको नरेंद्र मोदी का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की। मैं कितना कामयाब हुआ हूँ इस पर मैं बात नहीं करता, ये आप कीजिए। पाकिस्तान में भी एक नरेंद्र मोदी है। अब नरेंद्र मोदी और इंडिया वालों को बाद में, पहले क्योंकि पाकिस्तान के भी कुछ दोस्त मुझे देख रहे हैं, आजकल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई नरेंद्र मोदी आ गया है। अभी आपने इमरान खान की स्पीच मैंने आपको सुनवाई, और मैं समझता हूं कि लीडर ऐसा होता है। इंडिया के एक लीडर थे, पहले में मेरा जी चाहता है आपको ज़रा, ये 77वां सेशन है यूएनओ का, और शहबाज शरीफ की है। तो शहबाज शरीफ को मैं पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी समझता हूँ। ये जो मेरे दोस्त पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? जिस तरह इंडिया को तबाह और बर्बाद करने के लिए किसी युद्ध की ज़रूरत नहीं है, केवल किसी युद्ध की ज़रूरत नहीं है, इंडियन सेना की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को तबाह करने के लिए, इंडिया का बेड़ा गर्क करने के लिए नरेंद्र मोदी काफ़ी है। यही बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को तबाह होने के लिए, बर्बाद होने के लिए बिल्कुल इंडिया के साथ जंग की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है, और ऐसा शख्स जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, फिर उस मुल्क का मैं यही कहूँगा अपने ज़ुबान में कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, इंडिया वालों से मैं ये भी कहूँगा, अभी आपसे मैंने बातें करनी हैं, पहले ज़रा ये अपने पाकिस्तान के दोस्तों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त मुझे पाकिस्तान, इमरान खान नेवर had bad past for stealing money. Can you name anyone in Indian leads who never stolen money or did any cheat? No, इस अपना अहमद फराज, इस हवाले से इंडियन पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के ये शहबाज शरीफ है, जरदारी है, ये चोर हैं, ये चोरी करते हैं। पाकिस्तान में चोरी ज़्यादा करते हैं। इंडियन पॉलिटिशियन इस हवाले से बेहतर हैं, इंडियन पॉलिटिशियन उतनी चोरी नहीं करते। एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें वो कामयाब भी रहते रहे हैं। और इसी तरह से इंडियन पॉलिटिशियन, और ख़ास तौर पर यह नरेंद्र मोदी, ये इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब ये देखिए, इसकी उसकी ये मैं अब नरेंद्र मोदी और ज़रा शहबाज शरीफ को आपको दिखाता हूँ। पहले ज़रा शहबाज शरीफ को देखिए। ये शख्स है 25 करोड़ पाकिस्तानियों का प्रधानमंत्री। अब इसकी शक्ल देखिए, इसका अंदाज़ गुफ्तगू देखिए, और ऐसे थूक लगा लगा के ये पेजेस उलट रहा है, इसे बात करनी नहीं आती। बिल्कुल जैसे नरेंद्र मोदी को बात करने का सलीका नहीं, शहबाज शरीफ का भी वो उस्ताद है, उसका भी कोई सलीका नहीं। मुझे तो ये बिल्कुल बराबर बराबर से नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी तकरीबन मेरे ख्याल में मिलते जुलते 19-20 का कोई फ़र्क होगा। ये ज़रा नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों को देखिए, और इनका आप खुद फ़र्क देख लीजिए, इनमें फ़र्क क्या है। ये देखिए, Mohammad Shahbaz Sharif, Prime Minister of the Republic of Pakistan. I invite him to address the Assembly. ये आएगा, इसके चलने का तरीका, इसके उस्लूब का तरीका देखिए। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, अब देखो, थूक लगाएगा, मुंह में थूक लगाएगा कांटों को, और मुंह टेढ़ा कर करके इसकी शक्ल देखें, डरा हुआ, घबराया हुआ, लूमड़ी की तरह। Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, as I stand here today to tell the story of my country, Pakistan, my heart and mind have not been able to leave home. Standing here, I still feel that I am visiting one of the flood-affected areas of Sindh and Balochistan of my country. No words can describe the shock
we are living through or how the face of the country lies transformed. I have come to explain firsthand the scale and magnitude of this climate catastrophe that has pushed 1/3 of my country underwater in a superstorm that no one has seen in memory. For 40 days and 40 nights, a biblical flood poured down on us, smashing centuries of weather records, challenging everything we knew about disaster and how to manage it. Even today, huge swaths of the country are still underwater, submerged in an ocean of human suffering. In this ground zero of climate change, 33 million people, including जी दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा काफ़ी है, ये ज़्यादा देखने के काबिल ही नहीं है। मैंने ज़रा आपको दिखाया है, इसलिए दिखाया है, आई डोंट माइंड पर्सनली इफ समवन is illiterate and spite of a paper for rolling for our next page, but ours visionary dispute to be discussed. मेरे दोस्त अहमद फराज, you are right, but listen to me, my friend, listen to me. He is, he is Prime Minister of 25 crore Muslims of Pakistan. Now on the way he's talking like a beggar. He is telling the nations of the world, the leader of the world, that his country is suffering because of flood. And there is watershed. And his, उसने क्या कहा था? उसने कहा था, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो सन डूब जाता है। उस बेगैरत को भी आपको जानते, आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और ये घटिया आदमी, अगर तुम्हारा मुल्क मुश्किल में है तो तुम वहां जाकर, दुनिया के और लीडरों ने भी स्पीचेस की, मैंने तकरीबन सारी स्पीचेस सुनी, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने, उन्होंने वहां जाकर यह रोना धोना नहीं धोया। दुनिया के और मुल्कों में भी सैलाब भी आते हैं, जल्जले भी आते हैं। टर्की में भी जल्जला, तबाहकुन जल्जला आया। तैयब उर्दगान ने नहीं कहा कि हम मर गए, खुदा के लिए देखें, तैयब उर्दगान गया, तैयब उर्दगान ने भी यूएनओ में स्पीच की, और टर्की में जो जल्जला आया, टर्की में बहुत तबाहकुन किस्म का जल्जला आया, लेकिन टर्की का लीडर, उसने ये नहीं कहा कि मैं मर गया। भाई और मुल्कों में भी जल्जले ठीक है, लेकिन तुम एक भिखारी की तरह जाके, फिर जाता है ये, लास्ट ईयर ये मॉस्को गया, ये चाहिए तो ये कि अब प्यूटन को मिलने गया वहां पर मॉस्को में, रेड स्क्वायर में, वहां पर रेड स्क्वायर में मॉस्को में ये, और ये बजाय प्यूटन को मिलता, ये भागता हुआ वो कैमरे वाले के साथ बगलगीर हो गया, वो कैमरा मिला, ये उसकी तरफ भाग गया। फिर उसके बाद माइक्रोफोन इसके मुंह के साथ नहीं लग रहा था, क्योंकि मुंह भी वो छोटा है। तो इस तरह का लीडर जो होता है वो अपने मुल्क के लिए जिल्लत का बायस बनता है। अच्छा, इंडिया के जो दोस्त हैं उनको मैं कहूँगा, इंडिया का एक लीडर था लाल बहादुर शास्त्री, उसके हवाले से BBD.com पर मैंने एक कॉलम पढ़ा। रेहान फजल साहब ने, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से रेहान फजल ने एक कॉलम लिखा BBC.com के लिए पिछले साल, मैंने वो कॉलम पढ़ा। तो रेहान फजल वैसे बहुत तबई के आदमी है। मैं आप दोस्तों को भी, जो दोस्त मुझे देखते हैं, आपको अगर उर्दू पढ़ने वाले हैं आप, तो रेहान फजल को पढ़ा करें। रेहान फजल माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉलम होते हैं उसके। तो रेहान फजल का वो कॉलम जब मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ लाल बहादुर शास्त्री से। लाल बहादुर शास्त्री का कद बड़ा छोटा था, और अयूब खान और उसका मद मुकाबल थे। इस हवाले से अयूब खान और उसका वो शिमला अकॉर्ड जो हुआ था, ताशकंद अकॉर्ड जो हुआ था, उस हवाले से, मुआहदा ताशकंद के हवाले से, वहाँ ताशकंद में उसकी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान की वो मुलाकातें
रशिया ने कुछ रोल प्ले किया और वो 65 की वार के बाद ये सारा तमाशा लगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी के कुछ अच्छे पहलू हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इंडिया वालों को भी ये कहता हूँ, क्योंकि इंडिया वाले अपना फराज इंडिया वाले मुझे बड़ी गालियाँ देते हैं। हालांकि मैंने बार बार कहता हूँ कि देखो, आप गालियाँ ना दो, पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, तुम पाकिस्तान के बेटे हो, पाकिस्तान में सारी खामियां हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इंडिया का तो बाप ही है यार, उसमें खामियां भी हैं। अब देखें, मैं पठान हूँ, अपना अहमद फराज, मैं पठान हूँ, तो मैंने इन्हें बताया कि हम अफ़गानिस्तान से आए, मेरे भी परदादे अफ़गानिस्तान से आए थे, और उस वक्त जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यह इलाका भी शायद इंडिया का हिस्सा था। मेरे परदादे सन 1400-1500, आज से 600 साल पहले, नियर अबाउट 600 years ago, my forefathers came down to India from Afghanistan. They settled down here, and now I am a Pakistani, so I love Pakistan because I am a Pakistani. I born in Pakistan. I love Afghans because my forefather was from Afghanistan, so I love Afghans. I love Pakistan because I born here in this country. Right, Alhamdulillah, Pakistan Zindabad. I love my Pakistan. I also love Indians because Indians are our neighbor. We ruled over India for 700 years. We are father of India. You know, we have owned the real Indus Valley civilization. You know, India name, where from the name India come from? Indus Valley civilization. And Indus is flowing from Pakistan. Stream of Indus is flowing from Pakistan. River Indus is in Pakistan, not in India. It's come down from Himalayas, come to KPK, and then enter to Punjab, and then go to Sindh. That is River Indus. And the oldest civilization on which the Indians are prouding. They are saying that India has a very rich history, India has a very rich color, rich old civilization, and one of the world's best civilization in old era from India. Where are these old civilizations? They are all in Pakistan. I told them, you know, Taxila, Charsada, Navashehra, and Harappa, Sahiwal, and Larkana, Manjodoro. This was the old civilization of India, and all these old civilizations, the ruins of all these old civilizations in India. तो इसलिए मैं कहता हूँ, इंडिया वालों को समझ नहीं आती। वो इंडिया वाले असल में वो फिल्में बनाते हैं, वो फिल्में देख देख के इनका दिमाग खराब हो गया है, और ऊपर से इनके ऊपर नरेंद्र मोदी आके चढ़ गया है। नरेंद्र मोदी ने फिक्री तौर पर तो इनका बेड़ा ही गर्क कर दिया है, सोचने समझने की सलाहियत है ही नहीं है। ओ भाई, जो इंडिया की पुरानी तहजीब थी वो सारी की सारी आज पाकिस्तान में है, वो इंडिया में नहीं है। रियल इंडिया की, जो इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, वो सारी की सारी आज भी पाकिस्तान में है। इंडिया में वो ओल्ड सिविलाइजेशन नहीं है। तो बाकी बात जहां तक ताल्लुक है, आज की बात हम कर रहे हैं, चले पुराने जमानों को छोड़े, आज की बात करें। आज मैंने इंडिया वालों को कहा, तो ये आगे से मैंने इनको नरेंद्र मोदी भी दिखाया। तो मैंने एक दिन पहले, ये जरा सुनिएगा, मैं आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। मैं जो बात कहने चाह रहा हूं, अपना अहमद फराज, ये मैं इंडिया वालों से मुखातब हूं। मैंने इंडिया में भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। मैं जब बात करता हूं यहाँ पर, यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं कोशिश करता हूं आपकी आवाज़ बनूं, और मैं आवाज़ बनता हूं आम आदमी की, वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया, इम्पार्शियल होके यहाँ पर बात कर रहा होता हूँ। तो मैं ना इंडियन होता हूँ, ना पाकिस्तानी होता हूँ, ना कुछ होता हूँ, मैं होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच्ची बात करूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, और हो सकता है कि मेरी नॉलेज मे बी आई डोंट हैव ट्रू नॉलेज, सो आई वांट योर गाइडेंस प्लीज़। आप तनकीद करें, मुझ पे तनकीद करें, गालियाँ ना दें, तनकीद करें, मुझे बताएं कि मैंने ये गलत कहा,
मैंने अगर कोई बात झूठ कही, गलत कही, तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे माजरत करूंगा। और दूसरी बात यह है कि माजरत भी करूंगा और मेरी सलाह हो जाएगी। हो सकता है एक चीज़ की नॉलेज ना हो, देखें हर चीज़ की नॉलेज किसी को नहीं होता। हो सकता है मैंने कहीं गलत पढ़ ली हो, कोई चीज़ मैंने कोई चीज़ गलत बयान कर दी होगी। बिल्कुल, कश्मीर तो देखें, कश्मीर कश्मीरियों का है। लेट्स आस्क फ्रॉम कश्मीर whether they want to live with India or whether they want to live with Pakistan. Kashmir belongs to Kashmiris. Now let's ask from they have right of the, Imran Khan. What did you speak? Listen the speech of Imran Khan. Yes, they have the right to publicize. Ask from Kashmir if they want to live with India. Okay, Pakistan will quit from India, and if they want to live with Pakistan, then India must quit from Kashmir. This is the way. Now, last week, Muslim conference won the election. And the leaders of Muslim conference, they neither want to live with India, neither with Pakistan. As far as me concerned, I think Kashmir people want to live free, independent. But they need Pakistan because Pakistan is much suitable. Look, as far as you can see on Google Map, the location of Kashmir, this will be better for Kashmiris to live along with Pakistan. That is maybe Kashmiri have three choices: whether they want to live with India, whether they want to live with Pakistan, or they want to live independent. I think mostly Kashmiri will prefer to live independent. And secondly, most of the Kashmiri people will like to live with Pakistan. But in India, with India, nobody want to live with India and Kashmir. And lastly, as a Muslim, India has 70 or near between 70 to 75% population of Kashmir is Muslim. So as a Muslim, they will like to join Pakistan. They will never like to live with India. So sooner or later, you have to quit from Kashmir. Indian have to quit from Kashmir. Sooner or later, आपको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। कश्मीर किसी का बाप का नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है। और कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो अलग आज़ाद रहना चाहते हैं, ये आप कश्मीरियों पे छोड़िए वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आप कहेंगे कि आप कश्मीर पर कब्जा करेंगे तो आप इंडिया वाले अरबों रुपए आपके ज़ाया होंगे, लेकिन आप कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकते। आपको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, मेरे ख्याल में। अच्छा, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सब दोस्तों से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये व्यूअर्स भी अब कुछ कम हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हों। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं मिस्टर राइट, वाई मिस्टर राइट, कश्मीर, why Pakistan will vacate? Pakistan is not capturing. India should vacate. India is capturing. India is aggressor. India is doing something wrong in Kashmir. Pakistan is doing nothing wrong in Kashmir. Pakistan army is not capturing India. Yes. दिस इज मोदी। ये मोदी की सोच है अहमद फराज। ये मोदी की सोच है। वो एक घटिया आदमी है, वो एक गलीज आदमी है। देखें, और गलीज आदमी है। मैंने आपको कहा मोदी इतना गंदा आदमी है कि उसने इंडिया का बेड़ा गर्क करना है और कर दिया है। मोदी इतना गंदा और घटिया आदमी है, उसने इंडिया का बेड़ा गर्क करना है और उसने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। सेम लाइक दैट शहबाज शरीफ पाकिस्तान के साथ भी उससे मिलता जुलता ही यह खानदान है। ये दोनों पे चीज़ें, इनकी नस्ल कहीं मिलती होगी, एक नस्ल के हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में अच्छे लीडर भी आए हैं। ये मैंने आपको कहा, लाल बहादुर शास्त्री साहब। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया का लीडर था, तो सच है वो एक बड़ा लीडर था। कद उसका छोटा था, लीडर वो बड़ा था। ये मैंने एक व्लॉग बनाया, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ आप देखिए। इंडिया वाले भी देखिए। इंडिया वालों को ये गिला रहता है कि मैं इंडिया वालों की सर्जरी बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, उनका ऑपरेशन करता हूँ।
भाई ऑपरेशन ज़रूरी होता है तो ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ है तो उसका उस पर मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री पर मैंने एक व्लॉग बनाया है 2-3 दिन पहले, ज़रा देखें मैंने क्या किया। बहुत से दोस्त हैं वो लाल बहादुर शास्त्री साहब के बारे में नहीं जानते होंगे, तो ये ज़रा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जुमान मैं हूं, आपका अपना इब्न सिकंदर। 1965 की वार का जिक्र करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट अयूब खान के किरदार पर बात करूंगा इस व्लॉग में। बहुत खास व्लॉग होगा, तारीख के झरोकों में झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1965 में क्या हुआ था। तो सब दोस्तों से ये मैं गुजारिश करूंगा, इतना ये दिलचस्प व्लॉग होने जा रहा है तो सब दोस्त ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई होगी। ये फायरवॉल का जो इशू है, देखिए मेरी सब दोस्तों से ये गुजारिश है, प्लीज सब दोस्त चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। एक दीवार लगा दी है फायरवॉल। इस दीवार के असरात को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से लिखें। वैसे मेरे 2 लाइव स्ट्रीम होते हैं, आप लाइव स्ट्रीम पे भी मुझे देख सकते हैं, मेरे तजिया, मेरे एनालिसिस। तो आप चैनल को बेल आइकॉन अगर प्रेस करेंगे तो आप मेरे आने वाले वीलॉग्स और मेरे आने वाले लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहेंगे। मैं आपको वेलकम करूँगा अपने लाइव स्ट्रीम में। बगैर किसी तवक्कुफ के अपने मौजू पर आते हैं। रेहान फजल साहब का तजिया, एक पठान इब्न सिकंदर खान की जुबानी। ये 26 सितंबर 1965 का वाक़या है। इंडिया पाकिस्तान की जंग को ख़त्म हुए थे जब इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों लोगों के सामने खिताब किया तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे। तालियों के शोर के दरमियान लाल बहादुर शास्त्री साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने लंबे कद के हैं, इतना लहीम और शहीम जिस्म है, मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए। चलें हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिनके 5 फुट 2 इंच के कद और आवाज का अयूब खान ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। जी दोस्तों, अयूब खान साहब अक्सर लोगों के बारे में राय, उनके बर्ताव और उनके तर्ज अमल के बजाय उनके ज़ाती रंग और रूप की बुनियाद पर उनके बारे में राय कायम करते थे। ऐसे ही जुल्फ़िकार अली के हवाले से हुआ था। अयूब खान साहब का कद काफ़ी लंबा था और जुल्फ़िकार अली भट्टो का कद जरा छोटा था, उनसे छोटा था। तो वो जुल्फ़िकार अली भट्टो को जब उन्हें मिलने आता तो बहरहाल छोड़े, ये इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। पाकिस्तान में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर शंकर वाजपेयी ने, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनका कहना है कि अयूब खान ने कर दिया था कि इंडिया कमजोर है। वो नेहरू की वफात के बाद दिल्ली तो जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर अपना दिल्ली का सफर रद्द कर दिया था कि अब वो बात करेंगे तो किससे बात करेंगे। शास्त्री ने कहा आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के एक इजलास में शिरकत के लिए कायरा गए हुए थे। वापसी पर वो कुछ घंटों के लिए कराची में उन्होंने क़याम किया। तो उस हवाले से जब लाल बहादुर शास्त्री को हवाई अड्डे पर, कराची के हवाई अड्डे पर रुखसत करने आए तो अयूब खान ने अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने से कोई फायदा नहीं। फिर एक वो मौका भी आया जब लाल बहादुर शास्त्री के कायरा जाने से पहले अमेरिकी सफीर चेस्टर बोलिस ने उनसे मिलकर अमेरिकी सदर जॉनसन की तरफ से उन्हें अमेरिका आने की दावत दी गई। लेकिन इससे पहले कि शास्त्री साहब इस बारे में कोई फैसला कर पाते, जॉनसन ने अपनी दावत वापस ले ली और इसकी वजह फील्ड मार्शल अयूब खान ही थे। उन्होंने अमेरिका पर यह दबाव डाला था और उनका कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब वो इंडिया के साथ नए ताल्लुकात की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को इस तस्वीर में नहीं आना चाहिए।
इंडिया के एक सीनियर सहाफी कुलदीप नैयर साहब का कहना है कि शास्त्री ने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी माफ। कुछ माह बाद जब वो कनाडा जा रहे थे तो अमेरिकी सदर जॉनसन ने उन्हें रास्ते में अमेरिका में रुकने की दावत दी और लाल बहादुर शास्त्री ने इस 6 फुट 2 इंच के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के सदर की दावत मुस्तरद कर दी, अमेरिका जाने की दावत मुस्तरद कर दी। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री का कहना है कि सन 1965 की जंग के दौरान अमेरिकी सदर जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को यह धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ जंग बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गंदम हम इंडिया को देते हैं वो गंदम बंद कर देंगे। उस वक्त इंडिया गंदम की पैदावार के हवाले से खुद कफील नहीं था और इंडिया को गंदम दूसरे मुल्कों से मंगवानी पड़ती थी। शास्त्री को यह बात बहुत बुरी लगी और उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। उन्होंने अवाम से कहा कि हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। अनिल शास्त्री का यह भी कहना था कि इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री साहबा से कहा था कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे घर रात का खाना न बने। मैं कल पूरे मुल्क में एक वक्त का खाना न करने की अपील करने जा रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे आया एक दिन एक वक्त का खाना ले सकते हैं या नहीं। अनिल शास्त्री कहते हैं जब उन्होंने देखा कि हम लोग एक वक्त खाना खाए बिना भी रह सकते हैं तो उन्होंने तमाम शहरियों को भी ऐसा करने के लिए कहा। सन 1963 में कामराज मंसूबे के तहत शास्त्री को नेहरू की काबीना से इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त वो वजीर दाखिला थे। कुलदीप नैयर साहब का कहना है कि मैं एक शाम लाल बहादुर शास्त्री साहब के घर गया। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई लाइट भी जली हुई नहीं थी। शास्त्री साहब वहां अकेले बैठे एक लालटेन पर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर बिजली क्यों नहीं जल रही, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब से मुझे घर का या बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ता है, इसलिए मैं बिजली इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं कर सकता और अफोर्ड भी नहीं कर सकता। शास्त्री साहब के लिए रुकने पार्लिमान की हैसियत से 500 रुपए माहाना तनख्वाह पर अपने खानदान का खर्चा चलाना मुश्किल था। कुलदीप नैयर ने अपनी स्वाने उम्री में यह भी लिखा है कि मैंने उन्हें अखबारों में लिखने के लिए राजी कर लिया। मैंने उनके लिए एक सिंडैक्ट सर्विस शुरू की और जिसकी वजह से उनके मज़ामीन द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान ऑफ इंडिया में शाया होने लगे और उन्हें हर अखबार एक मजमून के 500 रुपए दिया करता था। इस तरह उनके 2000 रुपए की इजाफी कमाई होने लगी और मुझे यह भी अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पहला मजमून जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मजमून लाला लाजपत राय पर लिखा था। लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम करने वाले तमाम अफसरान का यही कहना था कि अपने नौकरों के साथ उनका बर्ताव इंतहाई शाइस्ता हुआ करता था। उनके निजी सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले CP श्रीवास्तव ने उनकी स्वाने याद लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स। इस किताब में वो लिखते हैं कि शास्त्री की आदत थी कि वो अपने हाथ से केतली में चाय लाते, उसने कप्स में डालते और अपने नौकरों को चाय अपने हाथ से पेश करते थे। और उनका यह भी कहना था कि चूंकि उनका जो कमरा था इसमें जगह कम होती थी, ठीक है जी, तो वो बड़ा सुपड़कर उनको बैठवाते थे, अपने कमरे में अपने नौकरों को बैठाते थे। श्रीवास्तव का यह भी कहना है कि कभी कभी वो बातें करते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते और कमरे में चलकदमी करने लगते और अपने आप से बातें करने लगते। कभी कमरे में ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती थी, शास्त्री अक्सर खुद जाकर बिजली का बल्ब थे। उनको यह मंजूर नहीं था कि अवामी पैसे से कि बिजली का कोई ज़िया हो। जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के इजलास में शिरकत के लिए रूस गए तो अपना खादी का 19 को कोट पहन कर गए थे। रूस के वजीर आजम
कोसिगन को फौरन अंदाजा हो गया कि इस कोर्ट में ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो सकेगा, लिहाजा अगले दिन उन्होंने शास्त्री साहब को यह सोचकर एक और कोट तोहफे के तौर पर दे दिया कि वो उसे ताशकंद की सर्दी में पहने। फिर क्या था, अनिल शास्त्री का यह लिखना है कि अगले दिन कोसिगन ने जब देखा कि शास्त्री साहब फिर वही पुराना कोट पहने हुए हैं, तो उन्होंने बड़े झिझकते हुए शास्त्री साहब से पूछा, शास्त्री साहब क्या आपको मेरा दिया हुआ कोट का तोहफा पसंद नहीं आया? तो शास्त्री साहब ने जवाब दिया, वो कोट तो बहुत गर्म था और बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसे अपने वफद के उस एक रुकन को मैंने पहनने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो अपने साथ कोई भी जी मेरे इंडियन दोस्तों, इंडिया में रहने वाले दोस्तों, मैंने आपको देखें लाल बहादुर शास्त्री पर बात की और आपको लाल बहादुर शास्त्री साहब की मैंने तारीफ़ें की, मैंने अप्रिशिएट किया। इंडिया में अगर कोई अच्छा लीडर आया है तो दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री। आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री जो था वो इंडिया का बेहतरीन लीडर था, एक सच्चा इंडियन था, इंडिया से मोहब्बत करने वाला लीडर था। तो मैंने उसकी तारीफ़ की, मैंने उसे अप्रिशिएट किया। मोदी को मैं अप्रिशिएट नहीं करता। मोदी एक गंदा और गलीज आदमी है जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम बार बार अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब यही कुछ मैंने कहा पक्ष। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं इंडिया का एक ऐसा लीडर मुझे जो बहुत पसंद था। देखिए, मुझे इंडिया का एक ऐसा लीडर जो मुझे, अब वो मुझे क्यों पसंद था, उसकी वजह यह थी कि वो लीडर इंडिया का, उसने इंडिया को बनाया। ये जो लीडर अभी मैं दिखाऊंगा वन ऑफ माय फेवरेट था, और ये मेरा फेवरेट इस वजह से था, आपको मैं दिखाता हूं। मैं पहले नाम नहीं बताया। मेरे ख्याल में इंडिया का ये बेस्ट प्रधानमंत्री था, और इसने किया क्या ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कम से कम ये ऐसा लीडर था, ये भी यूएनओ में कर रहा है, स्पीच कर रहा है। तो इंडिया वाले मेरे दोस्त, मुझे ये पसंद था और मैं इंडिया के इस प्रधानमंत्री को सल्यूट करता हूं। उसे बात आता था, उसमें विजडम भी थी, और मेरे ख्याल में आज इंडिया जो थोड़ी बहुत तरक्की कर रहा है उसकी बुनियाद इसी शख्स ने रखी थी। ये देखिएगा, बाद में मैं इसके किरदार पर बात करूंगा आखिर में। ये मेरा आज का आखिरी स्पीच है जो मैं आपको सुना रहा हूं, और आप सबसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल लाइक नहीं किया। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, IS खान ऑफिशियल आपका अपना चैनल है। तो जो दोस्त अभी तक जिन्होंने चैनल लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। यह है इंडिया का वो प्रधानमंत्री जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज़रा देखिएगा आप भी और सुनिएगा गौर से। इंडिया वाले ये समझते हैं कि हम इंडिया की In India, Mr. President, we have sought to promote inclusive development in multiple ways. Legislation has broadened access to education and secured rural livelihoods. We are now building in the world's largest program for food security. Digital technology is being harnessed to improve the delivery of public service and benefits to the people. Mr. President, India with developing countries. Using modest resources, we have built strong ties with Africa and the least developed countries. We are committed to building 100 institutions in Africa, have offered capacity building support, including thousands of scholarships, and made available concessional assistance of over 9.5 billion US dollars. India and Africa are engaging through the India-Africa Forum Summit process. We also look forward to participating actively
in the third conference on the small island developing states in Samoa in 2014 and contributing to its outcome. Mr. President, climate change is one of the defining challenges of our times. We must summon the necessary political will for crafting a robust global response to climate change on the basis of equity and the principle of common differentiated responsibility. Mr. President, sir, we are deeply concerned about the future of West Asia, a region with which India shares deep bonds of history and one that is critical for our energy security as well as the livelihood of nearly 7 million Indians who work and live in the region. The increasingly lethal conflict in Syria is not only a tragedy for the people of Syria, but also threatens stability and security in the region and beyond. It has been made worse by the use of chemical weapons. The use of chemical weapons, whosoever may have deployed them, must be condemned in the strongest possible terms. India supports strongly the elimination of chemical weapon material and equipment in Syria. There is no military solution to this conflict. We must intensify efforts to end the conflict and seek a political settlement. It is essential that the Geneva Conference be convened at the very earliest. Mr. President, we are encouraged that direct talks have resumed between Israel and Palestine. India supports an early realization of a sovereign, independent, viable and united state of Palestine with East Jerusalem as its capital, living within secure and recognized borders side by side and at peace with Israel. We also remain committed to the Palestinian quest for full membership of the United Nations. In our own region, Afghanistan prepares for a historic political, security and economic transition. The international community must support the people of Afghanistan through this transition and beyond in combating terrorism, preserving the progress of the past decade, and creating a stable, united, and prosperous Afghanistan. Mr. President, terrorism remains a grave threat to security toll of innocent people of the fact in our neighborhood in Pakistan. Speaking from this podium yesterday, Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan spoke of making a new beginning. I reciprocate his sentiments and I'm looking forward to meeting him tomorrow. India is committed since. अब देखिए, मैंने पहले लाल बहादुर शास्त्री की भी तारीफ की और उस बाद मैंने मिस्टर राइट व्हाट डिड यू ईट टुडे vomiting yeah okay Ahmed Faraz, let him do whatsoever what he is doing. Let's not focus on that. He is illiterate, ignorant man, so let's not focus on him. Let him go whatsoever what he do. I can block him, but I am not blocking him because no, I don't need to block him because this is the time he is exposing what are the thoughts of India. He is exposing himself. He is exposing India. He is a tattoo of Narendra Modi. Do you understand? ये इंडिया वाले जो मेरे दोस्त हैं असल में फराज ऐसे है, ये फिल्में बहुत देखते हैं। तो इन्होंने पिछले दिनों एक फिल्म बनाई
इंडिया वालों ने पद्मावती पद्मावती में नहीं देखता था, लेकिन वो फिल्म मैंने देखी। मेरे एक दोस्त ने कहा जी ये बहुत फिल्म है। अब उसने कहा ये अलाउद्दीन खिलजी के हवाले से है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी ख़ास फिल्म है कि ओल्ड इंडियन हिस्ट्री के हवाले से है। मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी का मुताला किया हुआ है, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अच्छा, ये पद्मावती फिल्म बनाई है, ये पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, तो बाप का काम होता है बेटे को पढ़ाना। मिस्टर राइट, आप हमारे बेटे हैं, इंडिया हमारा बेटा है, तो बेटे को बाप का काम होता है पढ़ाना। तो हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? तुम तो खोते हो, तुम तो गधे हो, तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? तुम गधों वाली बातें कर रहे हो मिस्टर राइट, तुम गधे हो, तुम गधों वाली बातें कर रहे हो, तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? बाप का काम होता है बेटे को पढ़ाना। हम इंडिया के बाप हैं। हमने इंडिया को, मैंने पहले कहा, हमने 700 ईयर इंडिया को रूल किया है, तो जाहिर है हमने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी शांति के लिए। तुम अपनी रक्षा जब भी नहीं कर सकते, हम देखें, हम पठानों ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारे चाइना वाले अब तो कर रहे हैं, तुम्हारा तो ये नरेंद्र मोदी तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा। तुम्हारी सेना जो है वो धोतियां उतारने वाली है, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तो हमने तुम्हारा हमेशा रक्षा की है, हमने तो इंडिया वालों की रक्षा की है। तो हम अब भी, जब भी तुम्हारा मुश्किल टाइम आता है, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम हमारे बेटे हो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम हो बड़े खबीस किस्म के बेटे हो, तुम इंतहाई गंदे और बेहुदा बेटे, नालायक बेटे हो। मिस्टर राइट, तुम्हें चाहिए अपने बापों से सीखो, हम तुम्हारे बाप हैं। देखें, हम तुम्हारे बाप हैं, हमसे तुम कुछ सीखो। तुम नहीं सीखते तो मैं क्या कहूँ? तुम कहते हो तुम इंडियन फिल्में देखते हो, तुम सनी देओल की वो फिल्म देखते हो। मैं आपको फिल्म की बात ही करने लगा हूँ। अच्छा, इंडिया वालों को वैसे तो हम पठानों ने ही हमेशा रूल किया है। 700 साल हमने इंडिया वालों को रूल किया, 700 ईयर हम पठानों ने इंडिया को रूल किया। अच्छा, इनकी ज़हनियत गुलामाना है। तो आज भी इंडिया के ये फिल्में देखते हो, तुम्हारी फिल्मों पे आज भी पाकिस्तानी खान है, हमारे पठान ही इंडिया में रूल कर रहे हैं। शाहरुख खान, सुलेमान खान, आमिर खान। लेकिन तुम, वो आमिर खान की भी एक फिल्म थी, हाँ, 3 इडियट्स, वो भी मैंने देखी है। 3 इडियट्स भी। और मैंने एक और फिल्म है, उसकी क्या नाम है, पीके, हाँ पीके, वो फिल्म भी मैंने देखी है। कोई ख़ास फिल्म हो, कोई मेरा एक दोस्त है, जब मैं उसके पास जाता हूँ तो कोई ख़ास फिल्म होती है, तो वो इंडिया की मुझे कोई ख़ास फिल्म होती है तो दिखा देता है। तो मैंने पिछले दिनों, इंडिया ने एक फिल्म बनी पद्मावती, मैंने वो भी देखी। उसने मुझे कहा जी ये बड़ी खास फिल्म है, ये अलाउद्दीन खिलजी के हवाले से है। मैं फिल्म को देख के हैरान रह गया। जो पद्मावत थी इंडिया में, जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया तो उसका शोर जो था वो बहुत गंदा आदमी था। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल उल्टी दिखाई वो फिल्म। उसका जो शोर था, वो जो थी पद्मावत थी, उसने अलाउद्दीन खिलजी से रिक्वेस्ट की कि मेरा खामद बहुत गंदा आदमी है, इससे मेरी जान छुड़ाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसने, बल्कि वो थी भी बड़ी खूबसूरत खातून थी, तो उसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरे साथ तुम शादी कर लो, मेरे साथ तुम निकाह कर लो, इससे मेरी जान छुड़ाओ। उसने खुद यह कहा। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बड़ा बाकिरदार आदमी था। उसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कहा, पद्मावत को कहा, अब शर्म तुम करो झूठे, तुम झूठ कह रहे हो, यू आर, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हारी फिल्म की बात कर रहा हूं। तुम फिल्में देख देख के मैं तुम्हारी। पद्मावत खिलजी को एक खत लिखा कि मैं आओ और मेरी जान छुड़ाओ। अलाउद्दीन खिलजी जब गया तो उसने कहा कि ठीक है, इसको तो मैं कर देता हूं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करता। मैं तुम्हें बता रहा हूं हिस्ट्री, तुम्हारी फिल्म की बात कर रहा हूं यार। मिस्टर राइट, बेटा खामोशी से सुनो। तुम हमारे
मिस्टर राइट बेटा, तुम देखें, हम तुम्हें रोटी भी देंगे, हम तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, तो हम तो तुम्हारा कोई उल्लंघन करेगा हम तुम्हें बचाएंगे। अब चाइना वाले तुम्हारा उल्लंघन करते हैं, हम पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानियों को देखें, हम पठान हैं, हमने सोचा है कि अब हम इंडिया वालों का और उल्लंघन नहीं करेंगे। इंडिया वालों का उल्लंघन, अब चाइना वाले तुम्हारा उल्लंघन करते हैं, उसमें हमारा कसूर तो यार नहीं है। चाइना वालों ने तुमसे 5 फिंगर छीन ली, अब इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? चाइना वाले तुम्हारा उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? तुम एक जाहिल आदमी हो, तुम्हें पता ही नहीं है इंडिया क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है पाकिस्तान की, तो तुम बात ही ना करो। पहले तो मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। इंडिया हमारा बेटा है, हम इंडिया के बाप हैं, और मैं इंडिया के बारे में मुझे जितना पता है तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है इंडिया क्या है, तुम्हें तो ये पता नहीं है हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, तुझे पता ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश क्या है तो आपको पता ही नहीं है। असम में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में, नागालैंड में क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारा 460 स्क्वायर किलोमीटर 5 फिंगर जो है वो तुमसे चाइना ने छीन लिए हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। अब तुम्हारा उल्लंघन जब होता है तो अपने मोदी को कहो कि वो तुम्हारा करे। अब हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ, जब भी तुम्हारी मुश्किल तुम्हें पड़ती है, तुम्हारी कोई फटती है, तो तुम पाकिस्तान की मिन्नतें करते हो और पाकिस्तान तुम्हारी मदद करता है। हम तो यही करते हैं, हमने तो तुम्हारा हमेशा तुम्हारी मदद की है। जब भी कोई तुम्हारा उल्लंघन करता है, हम पठान जाते हैं जाके इंडिया वालों की, भाई हम अब थक गए हैं, हम लड़ाई अब नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि तुम हमारे बेटे हो, अच्छे बच्चों की तरह रहो, तुम्हें बाकी कुछ है तो कोई मसला है तो बताओ, हम तुम्हारी अब भी मदद करेंगे। लेकिन तुम आगे से अपने बाप को गालियां देते हो, तुम मिस्टर राइट, ये जरा, ये तुम्हें पता है मिस्टर राइट, अभिनंदन को देखा है? अभिनंदन, देखो तुम कितने खबीस हो, हम फिर भी तुम्हें फंटास्टिक कप ऑफ टी पिलाते हैं। मैं कहता हूं अभिनंदन को पता है, देखो हमने अभिनंदन को फंटेस्टिक कप ऑफ टी पिला के वापस भेजा था, आपको पता है या नहीं पता मिस्टर राइट? हमने अभिनंदन को फंटेस्टिक कप ऑफ टी भी पिलाया था, तुम्हें पता है या नहीं पता? अच्छा, फिर मैं आपको फिल्मों की बातें करते हैं, छोड़ो ये बकवास आदमी है यार। अहमद फराज, आप मेरी बात का जवाब दो। आप इसे ना बताओ इलाहाबाद को भी छोड़ो, पाकिस्तान तो उस वक्त उससे भी पहले था, इंडिया था ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद। Thank you, Muhammad Ali. You are welcome. Muhammad Ali, you are welcome. Thank you so much. You are welcome. और भी जो दोस्त, all those friends who are watching me, you are all welcome. IS Khan Official is your own digital platform. This is your family digital platform. I am thankful to you. I am thankful to all of you for joining me. Please, all friends, subscribe the channel, like it, and share it with as much as you can. Share with all your friends. India is whatsoever what India is. This is not the topic of our debate. India is son of Pakistan. इंडिया हमारे बच्चा है। इंडिया का जब भी उल्लंघन होता है, हम इंडिया की रक्षा करते हैं। तुम शांत हो जाओ। ये केवल फिल्में बनाने से तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। इंडिया का जब भी उल्लंघन होता है, हम तुम्हारी मदद करते रहे, अब भी हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये मिस्टर राइट, ये कौ माता का क्या? अच्छा, हम पठान हैं, मैं तो पठान हूं, मैंने आज भी गोश्त खाया है। अच्छा, ये कौ माता जो होती है, ये कौ माता तुम्हारी कैसी है? अगर
अगर गाय तुम्हारी माता जी है तो तुम्हारे पिताजी कौन है? अपना मिस्टर राइट, तुम कौ माता के बेटे हो। तुम्हारी माँ कौ माता है तो तुम्हारा अब्बा कौन है? हु इज योर डैड? हु इज, तुम्हारे पिताजी कौन है, जरा ये भी बताओ। मियाँ उमर, अल्लाह अकबर, मियाँ उमर, please stop it. Yeah. Don't go, don't go behind the belt. Please don't go behind the belt. Please go, don't go below the belt, please. Meow, Meow, please. Oh my God. Allahu Akbar Kabira, Astaghfirullah, Astaghfirullah. आपने तो आधी, नहीं ये है ही बहुत घटिया आदमी है। मैं मजहब की बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद अली, आई एम सॉरी, मैं मजहब की बात, मैं हिंदू मजहब की बात नहीं करता। ये इतनी मुसलसल जब से मैं बात कर रहा हूं, ये लगातार मुझे गालियां दे रहा है। मैंने इंडिया वालों को गालियां नहीं दी हैं, इसलिए मैंने इसे कहा अच्छा अब देखो, ये मुझे गालियां दे रहा है। मैं इससे पूछ रहा हूं, ये अल्लाह अकबर। अब मैं हंसू या रहूं? आज तो मुझे हंसा। आज मैं बड़े अरसे से ऐसे खुल के हंसा नहीं हूं। ओके, नहीं, मजहब को मैं टच नहीं करता। मैं इंडिया वाले हमारे बेटे हैं तो इंडिया हमारा बेटा है। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, तुम पाकिस्तान के बेटे हो, इसमें गलत क्या बात है? मैंने इन्हें कहा, मैंने अभी, ये मुझे मुसलसल गालियां दे रहे हैं। मैंने इनको इंदिरा गांधी को दिखाया, मैंने कहा आई लव, अब मैं इंडिया का, अभी इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिखाया। देखें, मैंने इनको मनमोहन सिंह को दिखाया। मनमोहन सिंह, मैंने उसे सलूट किया। मैंने कहा मनमोहन सिंह ही वॉज अ ग्रेट लीडर। हाउ ही वॉज अ ग्रेट लीडर? इंडिया को उसने बेस बनाई। इंडिया में वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट, आज जो इंडिया ने थोड़ी बहुत तरक्की की है, ये मनमोहन सिंह की वजह से की है। मनमोहन सिंह की वजह से इंडिया ने तरक्की की, मैंने उसकी तारीफ की। फिर मैंने इंदिरा गांधी को भी दिखाया, इनको दिखाया। ये देखें, मैं दोबारा दिखाता हूं। जाने से पहले इंदिरा गांधी, अब उसे कम से कम बात करने का सलीका तो आता था। इन्होंने तो ऐसे लोगों को लीडर बना दिया। ये मैंने मुखालफत की नरेंद्र मोदी की। मैंने ये इन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी आपको बेवकूफ बना रहा है। मैंने इनको समझाया कि नरेंद्र मोदी, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेसी, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 145 करोड़ लोग रहते हैं। तो पूरे इंडिया को तुम्हें यह जाहिल आदमी नजर आया है जिसे तुमने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है। इन्हें मैंने मशवरा दिया, इंदिरा गांधी ने भी नहीं बनाया, बांग्लादेशियों ने बनाया। मिस्टर रॉन्ग, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश नहीं बनाया। वो हमारी गलती थी, हम पाकिस्तानियों की गलती थी। बांग्लादेश जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया, बांग्लादेश यहिया खान ने बनाया, बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया। इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया। तुम्हें यही तो बात है, तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, मैंने इनको, ये इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू था, मैंने सुना। इंदिरा गांधी को कम से कम बात करने का तरीका तो आता था। इन्होंने एक ऐसे शख्स को इंडिया का प्रधानमंत्री बना दिया जिसको, ये जरा देखो, ये है इंडिया का प्रधानमंत्री। इसकी शक्ल देखो, इंडिया के प्रधानमंत्री की शक्ल देखो जरा, ये देखो। इसे इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया है। अब कहते हैं ये देखो, सर्वस्पर्शी हो, इसका बात करने का, व्यापी हो,
सर्व पोषक हो, यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में भारत में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो अब तक इससे वंचित थे। आज 36 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कवच मिला है, जो पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर भारत ने उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस से जोड़ा है। भारत ने 3 करोड़ पक्के घर बनाकर बेघर। अब आपको मैंने ये दिखाया है नरेंद्र मोदी। अब ये कहता है कि हमने इतने करोड़ घर दे दिए हैं। इंडिया में पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन है 25 करोड़ और इंडिया में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका घर नहीं है, जो पुलों के नीचे सोते हैं, उनकी सोने की जगह नहीं है। इंडिया में 4 लोग ऐसे हैं जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है। घरों में, इंडिया वालों के घरों में टॉयलेट भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, और इंडिया वालों की औरतें मर्द नहाते हैं। देखें, हम ना टॉयलेट की यूज तो हर इंसान को ज़रूरत है। तो ये इंडिया वाला, ये मिस्टर जो राइट है, ये मिस्टर राइट, इसको शर्म आनी चाहिए कि इसे पता नहीं ये नहाता कहाँ होगा। इसके घर में वॉशरूम नहीं है, इसके घर में, ये मिस्टर राइट है, इसके घर में भी टॉयलेट नहीं है, इसके घर में टॉयलेट नहीं है। पाकिस्तान में कोई आदमी महीने नहीं सोया जिसका घर ना हो। पाकिस्तान में लोग पुलों के नीचे नहीं सोते। पाकिस्तान में हर घर में जितने लोग भी रहते हैं, सबके घरों में टॉयलेट हैं। इंडिया वालों के घरों में टॉयलेट भी नहीं है। अब मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा, हकीकत यही है कि इंडिया वाले जो हैं, इनके घरों में, अब आप अंदाजा लगा लें इनको। फिर आप कहते हैं कि मैंने कोई गलत बात की है, मैं गलत बात कर रहा हूं। और ये मोदी जो, जिसे इन्होंने अपना आबा बनाया हुआ है, देखें, Modi destroyed India into corona disease. He is continuing things those should be given to public as are. ओ भाई मैं आपको कह, ओके, व्हाट इज योर आंसर? ओके, आई विल आंसर यू। Elliot evil darkness question. If you have a wise question, I will respond you. देखें ये कह रहा है, ये शहबाज शरीफ की बात। अच्छा, अब मैं बात खत्म करता हूं। इंदिरा गांधी ने ये कह, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान अलग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कुछ भी नहीं किया। इंदिरा गांधी को तो मैं बहुत पसंद करता हूं। और ये है इंदिरा, ये जरा देखें, ये मैं आखिर में आपको, माई फेवरेट लीडर इज पाकिस्तानी पोलिटिकल एटमॉस्फेयर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड by its army? Yes, you are right. Elite evil, yes. That is something wrong in Pakistan. That is wrong in Pakistan. Alas, that would not happen in Pakistan. Otherwise, Pakistan is one of the, Pakistan is richest country in the world by natural resources. Pakistan has natural resources no country has. Pakistan has huge reserves of petrol, huge reserves of gas, huge reserves of platinum, huge reserve of uranium, huge reserves of coal. Pakistan is richest country in the world. That is the only reason that people like Shahbaz Sharif, people like Narendra Modi, they are destroying Pakistan. अच्छा, अब मैं इंडिया की बात कर रहे थे, पहले इंडिया की बात खत्म कर लें। ये इंडिया का एक ये भी लीडर है। आई लाइक हर। शी वॉज अ ग्रेट लीडर। आई थिंक शी हैज ऑल गुड क्वालिटी। शी नो हाउ टू टॉक। नरेंद्र मोदी इवन डोंट नो हाउ टू टॉक। मैं इंडिया वालों को कहता हूं, तुम कुछ अकल के नाखून लो। ये भी तुम्हारी लीडर है, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं।
तुम कहते हो कि ये पाकिस्तान ज़ाहिर है वो इंडिया की लीडर है तो वो इंडिया की बात करेगी, लेकिन कम अज कम उसे बात करने का तरीका तो ये लीडर ज़रा सुनिए, ये ज़रा थोड़ा सा ये देखिए, फिर मैं बात करता हूँ। ये ज़रा देखें, ये इंडिया की एक लीडर है। हाउ इज टॉकिंग? Stockpiling and Are any concrete initiatives being considered? well, except that we appeal to them, and I don't think we can do very much more at this stage. But I think if public opinion grows, that does have some effect. In Europe and in the United States, there is a debate on a freeze on nuclear arms. Do you support such a freeze? Yes, And also the nuclear-free zone idea, which is being considered in this part of the world, but also in Europe. I don't think it makes. I think not just in one zone or another. So you don't think it's a good idea to start with certain areas, so you could at least say that, well, we have excluded it from this. You can't really exclude it, because if it's a nuclear bomb falls next door to the area, you don't know which way the wind will blow the radiation. All this talk about disarmament, including in the non-aligned movement, does not prohibit the fact that you are in a certain arms race with Pakistan. Well, if we could avoid war, we certainly are very much for peace, and we have never invaded or threatened another country. But unfortunately, we ourselves have faced aggression 5 or 6 times. And with that experience, we have to be ready to defend our frontiers and our people. But, we spend very little compared to the size of our country or population or the length of our land and sea borders. We spend very little on defense. And when Pakistan suddenly jumps a decade ahead of us, we have to try to make up at least a portion of that. They jump a decade ahead. Are you referring to nuclear arms? Well, no, ordinary arms, the conventional arms. Although there's much talk of their going in for the nuclear, which they have so far denied. We of the developing world have no margin of safety. We shall be the first and the worst sufferers in any economic breakdown. In this interdependent world, where you cannot stir a flower without troubling a star, even the most affluent are not immune to such disturbances. Only with coexistence can there be any existence. At the non-aligned summit, one of the important aspects was the North-South dialogue, where the conference more or less said it's dead or a non-starter. What can you do in order to get it started? Well, several initiatives have been taken. Cancun. अब देखें, ये भी आपको मैंने इंडिया किया, इंदिरा गांधी praising in Pakistan. This is the highest level of ignorance. Oh yes, this is a higher level of wisdom. You are ignorant. You are ignorant. That is why you sing. I am praising Indira Gandhi. You know why? The reason. She know how to talk. She was a sober lady. She was a good leader for our country. She was a good leader. She was a true patriot Indian, and she was from India, so she had to love her country. She was not from Pakistan. She was from India, so she has done what she could for India. Okay, she done everything for India what she could. And luckily, before Indira Gandhi, I shown you Manmohan Singh. He was also a great leader. But I am surprised over Indians right now. Who is your leader? Who is your Pradhan Mantri right now at this time? At present, who is your Pradhan Mantri? That is really sad and terrible. Who is your leader right now? अब मैं आता हूँ आखिर में, बात ख़त्म करने से पहले, ये पाकिस्तान के वाले से ये 100 तरह की आप बातें करते हैं, आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान है क्या। आपको पाकिस्तान के बारे में जो कुछ तुम्हारा इंडिया का मीडिया झूठ कहता है, तुम उसके झूठ को माने जाते हो।
और इंडिया के मीडिया के झूठों पर यकीन करते हो। इंडियन मीडिया तुम्हें जो दिखाता है, तुम इंडिया वाले फिल्में भी बहुत देखते हैं। देखिए इंडिया वाले, असल खराबी मुझे समझ आ रही है। असल खराबी इनकी यह है कि ये इंडिया वाले फिल्में, मैंने अभी बात की तो आगे से ये बात करने लगे, ये फिल्में बनाते। इनकी एक फिल्म बनी, वो फिल्म भी मैंने देखी, वो फिल्म पीके तो मैंने 2-3 बार देखी है। आपने फराज देखी है? ये मिस्टर राइट से भी पूछो, इंडिया वालों तुमने वो पीके देखी थी? उसमें एक है बतस्वी जी, के क्या नाम है उसका, बतस्वी जी, हाँ। वो कहता है सदियों पहले महमूद आया था। वो कहता है, वो बतस्वी जी कहता है सदियों पहले महमूद आया था, उसने हमारे मंदिर गिराए थे, हमारे बुत तोड़े थे, उसने हमारा उल्लंघन किया था। सदियों पहले महमूद आया था। नो, मैंने, ये तुम्हारी फिल्म है, तुम्हारी फिल्म है। तुम इन फिल्मों की वजह से पाकिस्तान से हट करते हो। नहीं, मैं रिलीजन की, तुमने इकॉनमी की बात की, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे घर में मिस्टर राइट टॉयलेट नहीं होगी, तुम बाहर जाके सड़क पे नहाते हो, पानी ऐसे ऐसे डाल के, ऐसे ऐसे डाल के, तुम्हारे घर में पानी भी नहीं होगा। इसमें मैं अच्छा, ये कह रहा है, एक और जगह वो कह रहा है अंडर मोदी इंडिया इज फ्लोरिशिंग। हमारा सरप्राइज। अब इन जहलम को क्या कहे आदमी। अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सब दोस्त प्लीज, आपने खूब एंजॉय किया होगा। सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आई एस खान ऑफिशियल आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आई एस खान ऑफिशियल आपका चैनल है। मैं आम आदमी की आवाज़ बनता हूँ, भले वो इंडिया से है, भले वो पाकिस्तान से है। मैं कोशिश करता हूँ इंडिया वालों से भी, मैं तो कहता हूँ इंडिया वालों को, इनसे मैं पूछता हूँ, जो बात मैं पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देते। मैंने पूछा तुम्हें मिस्टर राइट कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया, तुम खामोश। मैंने तुमसे पूछा ताजमहल, वो आगरा का जिसकी तस्वीरें, ये देखो, ये ताजमहल की तस्वीर मेरे पास भी इधर है, ये किताब है साहिर लुधियानवी की, ये ताजमहल की तस्वीर है, देखो ताजमहल है, ये इंडिया में है, आगरा में है या नहीं है? ये बुक है मेरे पास, ये है या नहीं है? ये आगरा की तस्वीर है, आगरा इंडिया में है। ये किसने बनाया था? ये नरेंद्र मोदी ने बनाया था। ये किसने बनाया था? तुम्हारा वो कुतुब मीनार किसने बनाया था? तो बाप कौन है? तो ये तुम्हें मैं बता रहा हूं, बाप हमें, तुम बाप नहीं हो, ठीक है? झूठ बक बक मत करो। और दूसरा, तुम झूठ कहते हो, तुम कहते हो कि ये है वो है। इंडियन पाकिस्तान नीड फेयर लीडर्स ओनली टू स्टे काम। हाँ, मैंने तो दोनों का कहा। मैंने कहा पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है, भी मैंने कहा वो एक करप्ट है, एक चोर है। और यही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी एक जाहिल है, अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाय बेचने वाला है। चाय बेचते बेचते इन्होंने उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया है। अब तुम्हारा तुम्हारा जो, जिसे तुमने अपना, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारा उल्लंघन कर रहा है, तो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा आके? इंडिया वालों की इंडिया का उल्लंघन कौन कर रहा है? ओ भाई, इंडिया का उल्लंघन मोदी कर रहा है, हम नहीं कर रहे, खुदा के लिए। वो कहते हैं पाकिस्तान, इंडिया वाले इस बात पे जिद कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनका उल्लंघन करता है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी रक्षा करे। ओ भाई, पाकिस्तान तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम खुद अपनी रक्षा करो। हम पठानों ने ठेका नहीं लिया हुआ, हम लड़ लड़ के थक गए हैं। हम रशिया के साथ लड़ते रहे, हम अमेरिका के साथ लड़ते रहे, तुम्हारे साथ अब हम लड़ाई नहीं करना चाहते।
We know what you have, what reserve you have. We know everything about you. I think Arun M, do you have toilet at your home or not? What you do? What you do? How much money you earn per month? How much money you earn per month? I earn more than you. I earn maybe many times more than you. There is so much hungerness, starvation in India, not in anywhere in Pakistan. Anyway, it's enough right now, I think. Thank you so much for joining me. I'm thankful to all of you. Today it was a very, very long live stream. So I'm thankful for you, of all of you. I'm sorry if someone hurt because of me. I do apologize, okay? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को मेरी बात से दुख हुआ तो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था. आई वॉज जस्ट रिस्पॉन्डिंग यू. मैं सबसे दोस्ती चाहता हूं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहता. I know a lot about India. I have many friends in India. I have so many friends in India who do respect me. I don't have, all my friends are not abuser like Mr. Wright who was abusing me, and mostly Indians started abusing here. I did not abuse anybody. I respect all people, whether you are Indian or whether you are living in which part of the world. No, I do respect all people. Even I respect Indians. Most of the Indians who are watching me, they are my brothers, they are Muslims. You know, there are a lot of Muslims in India, I know that. And Islam is fastest growing religion in India, I know that. I know that Islam is fastest growing religion in India right now. And after 50 years, maybe Muslims will be a majority and Hindus will be a minority in India. After only 50 years. Just 50 years. I know that. Islam is fastest growing religion in the world and also Islam is fastest growing religion in India. ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था. आप हिंदू हैं तो भी हम हिंदू की भी हम इज्जत करते हैं, हम सब की इज्जत करते हैं. लेकिन जब भी आओ कोई यूज नहीं करता. हमें इंडिपेंडेंट हैं, हम आज़ाद हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं. अल्लाह के अलावा पठान किसी से नहीं डरता. Yes, thank you. Thank you, Ahmed Fraz. I am thankful to you. Thank you so much. Yes, yes, you are right. You are right. You are right. You are right. India is changing. India is making progress, but India is making this progress not cause of Narendra Modi. India is making this progress because of the plan of Manmohan Singh. Manmohan Singh was the leader who has bring foreign investment in India. Manmohan Singh is the leader who in his time, in 5 years when he was ruling India, he was a great man. I am saying you, Manmohan Singh was a great man. I am appreciating you. But when you will appreciate Narendra Modi, who know nothing, who just say war, we want युद्ध, हम युद्ध करेंगे, हमारा उल्लंघन हो गया, हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे, हम पाकिस्तान से ये बाबा खुदा के लिए ये दिस इज नॉट मी, दिस इज से युद्ध होगा. एंड ही इज फूलिंग यू. वो आपको बेवकूफ बना रहा है. वो आपको कहता है युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो. ये कोई बात है? तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, वो बकवास करता है, हर बात पे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं. पाकिस्तान के किसी लीडर ने ऐसी बातें की हैं? पाकिस्तान के किसी लीडर ने ये कहा है? तो तुम भाड़ में जाओ.
तुमको गंदा आदमी अच्छा लगता है तो देखें, मैंने इंडिया वालों को कहा है इससे तो बेहतर है कि तुम्हारा लीडर हो, उसकी शक्ल तो हो लीडरों वाली। इसकी शक्ल कैसी है बेहुदा, उसकी शक्ल देखो, इतना सा उसका कद है। हमारी तरह के किसी बंदे को, किसी पठान को इंडिया का प्रधानमंत्री बनाओ। इमरान खान तो पठान है, मैं भी पठान हूं। इमरान खान जिंदाबाद। आई लव इमरान खान। Yes, I love Imran Khan because Imran Khan is a Pathan. Imran Khan is a good looking man. He is smart. तुम्हारी शक्ल भी मोदी जैसी होगी मिस्टर राइट। मिस्टर राइट, यू आर नॉट मिस्टर राइट, यू आर मिस्टर रॉन्ग। Yes, look at me, look at me. I am a Pathan, look at me. I am 6 feet 2 inch. Your Narendra Modi is 5 feet 4 inch. I am 1 feet taller than Narendra Modi, like this. I am 6 feet 2 inch. My head. I am a young boy. Look, I am showing you my muscle. Look at me. This is a Pathan. Look at me. Look. I am a young boy. I am a cute, smart, athletic, intelligent young boy, man. What you are talking about? Take care of you. I am sorry if someone hurt because of me sometime. Yes, I am a young boy. I am an athlete. I am telling you, I have been a fast bowler. Yes, I have been a fast bowler. I am not showing you muscle. I am sorry. I am not showing you muscle. I just want to tell you that I am a powerful man. I am a strong man. I am not. Some people say, thank you so much. Thank you so much. You are all welcome. I am sorry if someone hurt me, except Mr. Right. I will say sorry to everybody, Mr. Right. If you hurt because of me, yes, I am a Pathan. Basically, my forefather was Abhishek Singh. My forefathers were Afghan. They come down to Pakistan. Down to India. At that time, there was not Pakistan. They come down to India in 600 years ago. Now I born in Pakistan. I am from Pakistan. I love my Pakistan. Umar, sorry. I also smoke. Okay. I can't lie. I am also a smoker. But I not smoke as much, but I smoke. I also smoke. Yeah. Earlier evil, first of all, let's change our mentality. MashaAllah. Darkness, evil darkness, that is question. MashaAllah. Thank you so much. Well, let me tell you, evil darkness, I think that as far as me, I think you are asking this question, tell me that what steps can be taken according to you to improve the relationship between India and Pakistan. Well, you and me, let us friends. Let's eliminate this hatredness. This will be the first step. Secondly, don't trust on your leaders. Pakistani leaders are fooling Pakistanis and Indian leaders are fooling Indian. Come out of politics. Come out of politics. We are neighbor. India and Pakistan are neighbor. Maybe we have some disputes. Yes, this is correct. We have some disputes. But India and Pakistan are not only countries which have disputes. There are so many other countries in the world, they have disputes. But they don't go to war. वो ये नहीं कहते कि युद्ध करेंगे ये नरेंद्र मोदी नहीं है. You know, there are territorial disputes between France and Germany. I have told you. फ्रांस और जर्मनी के दरमियान भी उसी तरह का डिस्प्यूट है जो पाकिस्तान और इंडिया का है. वो युद्ध करते हैं. स्पेन और फ्रांस के दरमियान भी डिस्प्यूट है.
वो युद्ध करते हैं। स्पेन और फ्रांस ने कभी युद्ध किया। अर्जेंटाइन और ब्राजील के भी वही डिस्प्यूट हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के हैं। अर्जेंटाइन और ब्राजील जंग करते हैं। यूएसए के कनाडा के साथ डिस्प्यूट हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं। यूएसए कनाडा से जंग करता है। यूएसए के मैक्सिको के साथ भी डिस्प्यूट्स हैं, मैक्सिको के साथ डिस्प्यूट्स हैं। वो एक दूसरे से जंग करते हैं, वो तो जंग नहीं करते। दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जिनके, इंडोनेशिया और मलेशिया के भी डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। इंडोनेशिया और फिलिपाइन के भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वो जंग करते हैं। असल बात यह है, विल हैपन। ओके, डार्कनेस, evil darkness, do you understand what I am saying? Okay, if you want war, then you are also welcome. अगर आपको जंग ही करनी है, ओके, अगर आप जंग करते हैं तो ठीक है। मैंने तो यही कहा कि जंग अच्छी चीज नहीं है, बल्कि ये इंडिया के शायर हैं, शायर हैं साहिर लुधियानवी। उनकी ये मेरे पास है, ये मैं आपको इंडिया के एक शायर हैं साहिर लुधियानवी, उनकी एक पोएम थी, मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जरा मैं तलाश कर रहा हूं यहाँ, ये मैं आपको सुनाता हूं, फिर छुट्टी करेंगे। ये इंडिया के शायर हैं साहिर लुधियानवी, आपने भी सुनी होंगी। इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया आपस में जब जंग लड़ते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पसे मंजर में उन्होंने एक नज़म लिखी, ये मैं आपको सुनाता हूं, ज़रा गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। साहिर लुधियानवी की नज़म है, उसका नाम है ए शरीफ इंसानों। मैं तो जंग का मुखालिफ हूं, मैं युद्ध को पसंद नहीं करता। अब उन्होंने लिखा, खून अपना हो या पराया हो। सारे ज़रा गौर से सुन लो, सारे ज़रा एक पठान की ज़ुबान से उर्दू की नज़म सुनो। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, जीस्त फाकों से मलाती है। आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों को हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कश्त हूं ही नहीं। हासिल जिंदगी खिर्द भी है, हासिल जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ 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 इस तीराबख दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, को जिनसे तकवीयत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें।
जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहजीब और इर्तिका के लिए, जंग मर्ग आफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए, जंग इफलास और गुलामी से, अमन बेहतर निजाम की खातिर, जंग भटकी हुई क़यादत से, नरेंद्र मोदी से, जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुरअमन जिंदगी के लिए। ये सैर लुधियानवी की है, ये सैर लुधियानवी की है, ये इंडिया की नज़म है। तो बहरहाल अब मैं अमन की बात कर रहा हूं और आगे से देखो मुझे क्या मिल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे रोज़ाना 2 लाइव स्ट्रीम होते हैं, दिन को 4 बजे भी और रात को 10 बजे भी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ कहीं से हैं, यू आर ऑल वेलकम। मैं सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। मेरे साथ मेरे लाइव स्ट्रीम में आए, आप मेरे कर देंगे तो आप मेरे वीलॉग्स भी देख सकेंगे। मैं रोज़ाना 1-2 वीलॉग्स भी बनाता हूँ यूट्यूब पर। दूसरा, जो दोस्त मुझे अभी देख रहे हैं, आप सबसे आखिर में एक बार फिर गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। IAS खान ऑफिशियल आपका चैनल है। आप इंडिया से हैं, IAS खान ऑफिशियल इंडिया वालों का चैनल है। आप पाकिस्तान से हैं, IAS खान ऑफिशियल पाकिस्तान का चैनल है। आप अफ़गानिस्तान से हैं, IAS खान ऑफिशियल अफ़गानिस्तान का चैनल है। IAS खान ऑफिशियल आपका है। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने मुझे देखा, मैं आपका थैंकफुल भी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर किसी दोस्त को मेरी वजह से हर्ट हुआ हो तो आई विल डू अपोलोजाइज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।